No, I think we should get started. Yes, let's start now, Musa. So सब कुछ दिख रहा है ना स्क्रीन पे? Everything visible? Am I audible? Hello? Yes. Okay. Somebody wants to join. Hmm. So what's the language that you prefer in? Do you want me to speak in Kashir poet, Angrez poet, or even if you want me to speak in Hindi, Urdu, whatever you're comfortable in? Just give me a poll and random answers so that I can start in that way. English. Okay. So I actually want answers from the people who are attending. जो लोग अटेंड कर रहे हैं तो उनका क्या ख्याल है, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, सो किस लैंग्वेज में वो लोग कंफर्टेबल है? उमर? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। ठीक छो? हाँ, सो तुम किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो? सो कोई सी भी लैंग्वेज में, ओके, इंग्लिश, उर्दू, कश्मीरी। ठीक है, इसका मिक्स। हाँ, ठीक चलो है, इंट्रोडक्शन पर करो स्टार्ट. लेट्स डू a brief round of introduction with the people so that I at least know कि मैं किन से बात कर रहा हूँ, because few people I know and the rest I don't know. So I'll just call out names, just give you a 2-line introduction, and then probably we can start with the session. So Adiba Bhatt, can you start please? Yes, Assalamu alaikum. Walaikum salam. My name is Adiba, and I recently graduated, did my BTech from GCET Gaunderbal. Mm-hmm. Okay, And can yes, yes. I am from Srinagar. Sure. I'm Thank you from so much. Srinagar. Yeah. Okay, thank you. So then we have Javed Ravani. Can you just give a brief introduction, your educational background, and the place you are from? Assalamu alaikum. Walaikum salam. My name is Juwaira, and I have recently completed my graduation from Government College of Engineering and Technology, Safapura. Plus, I had an internship of 1 year from Nile at Srinagar in AI, Artificial Intelligence and Machine Learning. Okay. So then can we move to Kamil? Thank you, Javed. Kamil Kazi. Are you there? So I think he's not able to speak, or something is going on with the device. So can we just move to Mahvish Kadir? Assalamu alaikum. Walaikum salam. Myself Mahsh Qadir. I'm from Srinagar and I recently done my BTech from Kashmir University, North Campus. Thank you you. so much. And I think Mohsin Urfi, you just give your introduction, then we'll have you probably some 5 minutes or so. Assalamu alaikum warahmatullah. Walaikum salam. Mohsin Urfi. I have completed my masters in public administration. I'm from Baramulla, and I will be your. I am part of the career and counseling team. Yeah, can we move to Mujib Ashik? Thank you, Mohsin. Assalamu alaikum. Walaikum salam. My name is Mujib and I am doing BCA from Nile Srinagar, and I also live in Srinagar. Okay, thank you so much. Can we move to Salim Jahangir? अस्सलाम वालेकुम। Salam. My name is Jahangir Bashir. I am from district of Farah. I have done BTech in Computer Science Engineering from Aryans College of Engineering, which is located in Punjab. Thank you so much, Jahangir. Thank you so much, Jahangir. Move to Umar Bashir. Assalamu alaikum warahmatullah. My name is Umar Bashir. I am from Baramulla and currently I am doing honors in IT at
Baramulla Degree College. Thank you so much. Can we move to Zahid Amin? Assalamu alaikum. My name is Zahid Amin. I have recently completed my graduation from Kashmir University in BTech CSE, and I am also from Srinagar. Thank you so much. So there are a lot of people who want to enter the meeting, but I don't read the names, so I'm not letting them enter the meeting. So my name is Musawir Khalik. So I will be your mentor, जो तुम्हें पढ़ाएगा. So sharing my passion of knowledge in the field of machine learning. So I'll just tell you a little about my background. I hold a master's degree in computer science and automation, which I earned from Indian Institute of Sciences. So during my academic journey, I specialized in machine learning, deep learning, and cryptography. So I've always been driven by the curiosity about the intersection of these fields, and that led me to the current role I'm currently as a full-time research scientist working. So as you know, that quantum computers are coming, and a lot of stuff is happening in the industry. So I'm working in that area. So we're working in the forefront of technology. So what are my roots? So I also come from a beautiful region of Kashmir. I'm from Baramulla. So I understand that the unique challenge and opportunities that our region presents, because we have very less a path that people are showing us, and we lack a lot of guidance. So it's an immense source of pride for me to support our talented youth like you to pursue their knowledge and success. So I'm genuinely thrilled to witness your enthusiasm for the learning, because as you saw, we had a previous group in which I think nearly more than 100 people joined, or I think around 100 people joined. But we had to make a conscious decision, me and Urfi, and we had a lot of discussion about it. So what should be done? So we just cherry picked Kashmiri people so that we can reach these, because other people from other states, they do have access to the knowledge and access to the guidance. So we wanted you people to guide, and I hope you are also excited as we are excited on this journey of learning discovery. And it's a great privilege to teach you, and I'll be committed to help you to the best of my capabilities. And let's do it together. And I'll just start with our goals and motto. So हम लोग क्यों कर रहे हैं ये चीज़? So what is our motto and what is the things that as I already said, कि जब हम कश्मीर के लोगों को देखते हैं, the problem there is कि there are again multiple requests. Should I even admit them? So when we see Kashmir, and as you might know that very less people are into technology, we probably are good in civil services. There are a lot of doctors coming out of the valley, but there is very less percentage of people who go into tech. By tech I don't mean to develop websites or do stuff like that, but by tech I mean to be at the forefront of the technology, like being a scientist or doing some groundbreaking research or something like that. It's an unfortunate event that people in Kashmir, that we don't have proper guidance. So because of that, we're sort of struggling. So इसलिए हमने क्या किया? So we thought of having these sessions particularly for Kashmiri people. So we'll post these recorded sessions, because I'll be talking to Kashmiri people, and probably I'll be using mix of Hindi and English. So we'll edit the parts. Yath must be Kashmiri part kath kare, yath must be Kashmir mutlikin one. So the thing is, because sometimes due to my sentiments or emotions, I'll say something, but I didn't want other people to listen to that. So just a prior thing, you can interrupt me anytime if you do not understand anything. You can interrupt me at any point of time. So whatsoever it will be, if it's a silly question, I don't mind, I'll answer that question. So the first thing is, we'll talk about our goals and motto. So as you can see on the screen, so I think my pen is visible, so that the things that I'm writing, is that visible? So I'm just scribbling. Hi, is it visible? Okay. Yeah, surely. So first thing is, we'll provide a comprehensive course on machine learning, deep learning. I know you have heard these buzz terms, but to be frank with you, I haven't seen people from Kashmir who know machine learning and deep learning, because I'm a working professional and I know what sort of things that we do in current industry, and what are the people that are training these people, and what's the background they have, because I usually visit institutes like NITs and Kashmir University. I have also visited, I think, all the major institutes that are in the valley. So I have found like immense lack of knowledge in this field. Probably you might know, you may feel you know something, but down the line, I don't think that that's required in the industry. So that's the first thing. We want to give a comprehensive course on this. The second thing that we had in the mind, and I think it was Mohsen Urfi who told me this, we have to reach the folks who lack guidance, because I'm a full-time teacher as well in here. So I teach BTech in Maths and Computing at IITs and ISCs, this course. So
उर्फी ने ऐसा किया कि उन्होंने मुझे बोला कि नो नो, द थिंग इज कश्मीरी पीपल लैक गाइडेंस, सो हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए. सो दैट्स हाउ वी केम अबाउट दिस. And then people, there was also a guy who knows me personally, Jahangir. He called me, I think, multiple times, and he told me we need some guidance, we need help. So I think he's also there. So ऐसे लोगों की वजह से, and Javera is also there. She also knows me because I have given a session in their college or university, whatever it is. So they also wanted some guidance from me. The second thing is because most of the courses जो लोग अभी पढ़ा रहे, जो तुम लोगों ने ट्रेनिंग करी होगी, they are business oriented, I'll say, because their job is, they are not doing any full-time job. Their full-time job is to teach people, and probably whether they know or I won't comment on that, but the thing is they don't know how, what the industry requires. And then you will feel that people like you guys are struggling when you go to interviews. People don't take freshers out there, so because the companies think that these people have lack of knowledge, so we want to make the learners industry ready. That's the motto, like provide comprehensive course and then reach the folks that need guidance. And then we have to make the learners who did not have the guidance and make industry ready, and they should be directly able to go in the interviews and able to talk there about the questions that are being asked them. So how do I teach? Like what will be my method of teaching? So if you know, like people usually how they deal with concepts. So there are two major ways. If you see, the first is breadth first, and the one is depth first. So for example, if you see how you read from class 1 to class 10, तो कोई टॉपिक हम ऐसे पढ़ते थे कि हमको कोई उस चीज़ के बारे में जानना था, एंड वी वेंट टू डेप्थ. फॉर एग्जाम्पल इन कैलकुलस तुम लोगों ने कुछ चीज़ की एंड वी वांटेड द डेप्थ ऑफ दैट टॉपिक. तुम्हें बहुत चीज़ें उसके बारे में जाननी थी. दैट्स द डेप्थ अराउंड वन टॉपिक. But how I believe that the teaching should be, learning should be done is breadth first. You should know what is happening there. For example, if you have three concepts, concept 1, concept 2 and concept 3. So usually how I like to teach or how I like to learn myself is that I'll first learn concept 1, then I'll learn concept 2 and then concept 3. So I'll get to know about the breadth of the subject. So मैं पहले कोशिश करता हूँ कि मुझे ये सारी चीज़ों के बारे में पता हो, that उससे मुझे एक bird's eye view मिलता है कि what's going on in the field. For example, उसके बाद अगर मुझे ऐसा लगा कि for concept 1 मुझे ऐसा concept है जिसमें मुझे डेप्थ में जाना चाहिए, then I go deep into that. So that's what I'll be covering here. I'll go in the breadth first manner. So I'll cover all the concepts, and then अगर मुझे ऐसा लगा कि some things are there जिनको मुझे breadth में, जिनको मुझे depth में जाना है, तो we'll do that. And I'll assume no background for you people, because most of you that you come from tier 2 or tier 3 colleges, so I don't assume any background in, for example, specialization in mathematics, in probability stats, matrix theory and things like that. So I'll try my best to start from bare bone basics. और जहाँ पे मैं पढ़ा हूँ और you think that you don't understand और तुम्हें समझ नहीं आ रहा, just stop me there, interrupt me, I won't mind, and just ask me the relevant questions right there. So even if you feel that question is stupid and probably people will laugh at me कि इसको ये चीज़ भी नहीं पता, but it's okay to ask questions, is okay. And then our course, it will be project oriented, so we won't be just giving you theory and covering the stuff, because there are a lot of theoretical videos which don't delve into practicality. So we'll be in each module we'll be targeting a project. For example, if we read about something, if we read about for example, let's say expert data analysis, we'll do that there, and हम लोग उस पर कुछ project बनाएंगे, and that project will go into a GitHub. Because I think like you people are not made industry ready because of that. You don't have good GitHub accounts, you don't contribute to open source. तो बहुत सारी problems है जो मुझे तुम लोगों से discuss करनी है, and that will go along the way. So I'll just talk about some logistical things that we are going to do, and we are, as I took a poll कि कितने लोगों को कितने sessions चाहिए, तो most of them were 3 to 4 sessions in a week. So हम लोग 3 to 4 sessions हम लोग week में लेंगे. And it may depend, it may vary. Some weeks we'll just have 3 sessions or 4, and depending on your availability. So I'm a little bit disappointed because I was expecting at least 20 people to join the meeting, because I have made a trade-off कि सिर्फ कश्मीरियों को पढ़ाना है. So I did not share the link with other people as well. As you saw that हम लोगों ने truncate down किया, एक group बड़ा सा group था, उसमें से हमने बहुत कम लोगों को लिया. That's first problem that I see in Kashmir, is that they are being non-serious in many aspects, and then we claim, हम लोग प्रपोज प्रॉब्लम करते हैं कि we lack this in Kashmir, we lack that in Kashmir, but we ourselves are not ready. The first people that are to blame are ourselves. I'm getting these invitations again, but I don't recognize the names. Can you just put a message in the group or somewhere, so please use your real name so that I can admit these people?
because I like some people I don't know. Okay, let's move. So the first thing I told you that logistical will be having 3-4 sessions. Is everybody okay with having 3-4 sessions in a week? Anybody can unmute yourself and confirm that. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so I hope Umar is speaking on behalf of everybody. So he's saying 3-4 sessions is okay. So tentatively, because I'm a full-time working professional, so because I lack a lot of time, so Saturday, Sunday, and Wednesday are the 3 days where I'm sort of free. Like Saturday they are holidays for me, and Wednesday because I'm working from home for 5 days in a week, and 2 days I go to office. So Wednesday and one more day I'll communicate to you accordingly. So these are the tentative things. Probably there will be some change here and there. And the timings we'll have is 7 p.m. this time because it's after Maghrib Salah and you can be done with your Salah. Then probably we can prolong session till 10 or 9:30 or so. और हम लोग उसमें ये करेंगे कि we'll discuss a bit. And I want this to be an interactive session. It's not like कि तुम लोग को समझ नहीं आ रहा कुछ and then you are just listening and you are sleeping there. ऐसा भी होता है कि मैं बोल रहा हूँ, I'm assuming कि तुम लोग को सब समझ आ रहा है and then suddenly you are sleeping and you don't understand a thing. So I need commitment from you people, hard work, dedication. I won't say कि everything comes for free. I'll teach you. I will be machine learning masters. I want you guys to at least put, I'll say 15 to 20 hours a week. That should be enough for this. Because I told you कि ये course जो ये project oriented होने वाला है. So whatever I'm speaking here, you have to make notes. Is everybody make notes by the way? Is everybody ready with the notes, copy, pen, papers? I assume that though. Yes, sir. We are ready, sir. हाँ तो बाकी लोग एग्री करते हैं कि हम नोट्स बना रहे हैं. आई जस्ट रैंडम. महविश कादर, आर यू मेकिंग नोट्स? Yes, sir. मैं यही चाहता हूँ कि तुम लोग नोट्स बनाओ बिकॉज बाय दैट तुम ऐसा लगेगा कि नहीं हम लोग जो रिवीजन करने जा रहे हैं वो हम अपने नोट्स से कर रहे हैं. सो टुडेज सेशन इज मोर ऑफ अ लॉजिस्टिकल वन एंड आई प्रॉब्ली ट्राई टू कवर सम टॉपिक्स एज वेल. एंड इफ आई गो फास्ट और गो स्लो, जस्ट स्टॉप मी देन एंड देयर, interrupt me and tell me no sir, we're not understanding this, can you please explain once more. So how have we designed this? The first thing is we'll be having a team of mentors. It's not only me who will be teaching you, probably I'll bring some guests as well. तो कुछ मीटिंग्स में मैं तुम्हारे साथ इंडस्ट्री लीडर्स को इंटरेक्ट कराऊंगा जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं इस टाइम, और वो आएंगे. फॉर एग्जाम्पल लेट इट बी सम ऑन सम डेज वो लोग आएंगे और तुम्हें कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाएंगे. सो दैट आई वांट यू टू गेट अ ब्रॉड पर्सपेक्टिव अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन द इंडस्ट्री. So we have good people who are working in Microsoft, in Amazon, and in other FANG companies like Meta, Facebook. So I'll probably try to get them once in a fortnight. In 15 lectures, there will be one guest lecture. So we'll teach you the theory and show you hands-on experiences. I'll do some coding myself, and these people will do the coding live in the live streams. And after that, we have teaching assistants. So we'll give you projects and assignments. In each module, for example, in a week there will be at least one assignment. So we'll expect you to be as enthusiastic as I am regarding the teaching, because I told you nothing comes free because you have to do hard work. I cannot tell you कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा तुम्हें बहुत कुछ आएगा. No, it's not like that. You have to, because I am tying the string from my side, you also have to do the same thing from your side. You have to work hard on the projects. You have to work hard because I know तुम्हें शायद बहुत प्रॉब्लम्स होंगी कुछ चीज़ों को जाने. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ब्रेथ फर्स्ट. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, एंड स्टिल इफ यू डोंट अंडरस्टैंड जस्ट ट्राई टू वॉच वीडियोज अगेन. आई विल ट्राई टू मेक दीज वीडियोज अवेलेबल ऑफलाइन एज वेल. सो ये टीचिंग असिस्टेंट्स जो है ये तुम्हारे प्रोजेक्ट चेक करेंगे. सो द असाइनमेंट्स द प्रोजेक्ट्स विल सबमिट, एंड ये उसमें हेल्प करेंगे कि ये तो कहाँ पे तुमने गलतियाँ करी है. तो दे विल गिव यू फीडबैक बेस्ड ऑन दैट. एंड वी हैव अ रियली ग्रेट पीपल who are right now doing BTech in IIT. So I have a team of 5 people who will be actually doing this. So they'll be checking your assignments and giving you the feedback. So I think I have access to 4 or 5 people, and they're quite busy, but they were good enough and kind enough to tell me that if you are doing this for your state, so we're pretty happy to just grade your assignments. So that was one of the reasons कि मैं इतने लोग ले नहीं सकता था, because I think about 20 was difficult for me. If अगर 20 लोग assignment submit कर रहे हैं and I have only 5 people to check them, so it really becomes difficult. So we'll make groups of people. For example, तो मैं अगर इस टाइम हमारे पास for let's say 15 लोग हैं, तो 15 लोगों के हम 5 ग्रुप बनेंगे, 3-3 लोगों के. So I hope कि तुम लोग assignment खुद से करोगे. You won't plagiarize, you won't copy it from somewhere, because after all it's for your learning. And we have plagiarized checkers as well, so we'll easily know that ये copy हुआ assignment है, because there are tools to check plagiarism as well.
सो वो आई एक्सपेक्ट एटलीस्ट कि द अमाउंट ऑफ वर्क वी पुट एंड तुम उससे बहुत कोशिश करो कि हम उससे ज़्यादा एफर्ट्स पुट करें, बिकॉज आई डोंट थिंक कि इसके बाद कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आनी है. आई ले योर फाउंडेशन बेटर एंड आई गिव यू द कंटेंट की ऐसा होना है कि इसके बाद जब मैं कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा आई गिव यू लिंक्स. देयर इज अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन. व्हाई आई टुक दिस सेशन वाज द फर्स्ट थिंग वाज देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर ऑन यूट्यूब टीचिंग. I like refrain to words to use this word, but most of the content is nonsense because they don't know what are they teaching about and what are these things going on. So अगर even मुझे I was just recently talking to somebody, I told him कि जब मुझे कोई चीज़ सर्च करनी होती है YouTube में I have to use VPN बिकॉज कि इंडिया में इतने सारे लोग बेकार बैठे हुए हैं, हर कोई वीडियो डालता है यूट्यूब पे, तो इट बिकम्स रियली हार्ड टू इवन रिट्रीव अ वीडियो विच इज़ ऑफ एनी वर्थ. तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे फेस हो रहा है, एंड दैट्स द प्रॉब्लम. एंड इन टेक्निकल इट्स कॉल्ड information obesity. As people have eat a lot of food, they became obese, and similar is with this. A lot of information is around YouTube, around all the blogs and stuff, so it is creating an obesity in us, and we don't know what to read, which is the correct source. That was one of the reason also that I wanted to start this, कि मैं खुद चाहता था कि no, I'll at least guide some students so that उनका foundation ले हो and they know what we are doing. And then we have career and guidance. So for let me put it this way, मैंने अपना काम किया, मैंने थियरी पढ़ाई, मैंने एक्सपेरिमेंट में कुछ करा है, like I wrote some code, I made you understand the things, then you also made your projects. Then the thing comes कि तुम लोग जब इंडस्ट्री के लिए इंटरव्यू देने हो, फॉर एग्जाम्पल यू गो टू Amazon, यू गो टू Microsoft and you go to other things, they take you interviews, और वहाँ पे ये प्रॉब्लम होता है कि you guys know a concept but you cannot communicate it well. So for that we have a career and guidance cell, and or we will be heading that cell, so they'll help you first in profile building. जैसे हमारे पास GitHub का प्रोफाइल कैसे बिल्ड करते हैं, how to use LinkedIn to reach maximum people who are having the same things and same prospects as you. और सेकंड चीज़ जो है कम्युनिकेशन पे, हाउ टू कम्युनिकेट अ थिंग, कि जब तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछे हाउ टू आर्टिकुलेट अ थिंग, कैसे उसको बताना है, कैसे कॉन्सेप्ट समझाना है. सो दिस विल प्रॉब्ली हैव अगेन वन सेशन वंस इन अ फोर्टनाइट. दिस विल बी अपार्ट फ्रॉम द लेक्चर्स दैट टॉक. तो उर्फी एक सेशन लेंगे, तुम्हें कम्युनिकेशन पे ये लेते रहेंगे 15 दिन में एक सेशन की, हाउ टू कम्युनिकेट प्रॉपरली. बिकॉज आई थिंक यू वुड एग्री कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स ये होता है कैसे मैं कम्युनिकेट करूँ किसी चीज़ को. तो वो चीज़ तब आएगी जब तुम ट्रेन किए जाओगे. एंड वी एज्यूम कि यार, because we usually come from remote areas and we don't know how to communicate. For example, even there are people who have access to good quality people, but still we are not being trained in how to communicate things, कि हमें बोलना कैसे है, चीज़ों को कैसे articulate करना है. Okay, so and then the big thing is, after successfully completion of these courses, I'll provide you the certification from Indian Institute of Sciences, because I run a club here. तो मैं तुम लोगों को मौका दूंगा कि जो यहाँ पे ये बैचलर्स वाले काम करें, मास्टर्स वाले, तुम लोग इनके साथ कुछ प्रोजेक्ट्स करो, एटलीस्ट वन प्रोजेक्ट. आई विल मेक श्योर कि ये सब कंप्लीशन के बाद तुम्हें यहाँ से एक सर्टिफिकेट मिले, और तुम्हें अपने सारे असाइनमेंट्स पूरे करने होंगे, और उसके बाद एक प्रोजेक्ट करना होगा इनके साथ. वी कॉल इट डेल्टा एक्चुअली. सो प्रीवियसली वी हैव गिवन सर्टिफिकेट्स टू आई थिंक पीपल हु आर फ्रॉम IIT Delhi, IIT Bombay people, so they collaborate with us. सो हम लोग ये सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद तुम्हें सर्टिफिकेट्स देंगे ये वाली चीज़ों के. एंड देन देयर विल बी अपॉर्चुनिटी टू डू इंटर्नशिप्स हेयर इन IIT एंड IICs. तो यहाँ पे बहुत सारी लैब्स है जो इंटर्नशिप्स के लिए लोगों को लेती है. तो इंटर्नशिप्स में उनका कोई अपना अच्छा प्रोजेक्ट होता है, यू विल बी वर्किंग ऑन द रियल प्रोजेक्ट, और वहाँ पे तुम्हें और एक्सपोजर मिलेगा. इन लाइफ इट डज नॉट मैटर कि तुम्हारे पास कितनी नॉलेज है. इफ़ यू आर ए लोन आइंस्टाइन, डजंट मैटर. अगर एक आइंस्टाइन भी होता और वो अपने कोने में छुपा रहता तो इट डजंट मेक सेंस. सो यू शुड बी अराउंड गुड पीपल जो तुम्हें बहुत अच्छे से कवर करें. Like Urfi is one of the mentors who even taught me things. So बहुत help करी है मेरे communication को अच्छा करने में. And then probably I am a junior to him, but still he guides me throughout the life, and because he has a lot of experience in this field. So I wanted you guys to learn a lot from Urfi, and he's a tremendous speaker, and इनने मुझे guide किया because he holds a degree in mass communication as well. So he helped me how to articulate things, कैसी चीज़ों को बोलना चाहिए. So that's why I kept him, and even I forced him to come to the career and guidance cell की at least हमारे student जो सफ़र कर रहे हैं, please do contribute some things, and he was more than happy to do it. And he's also a full-time working professional, and he's taking time to do this. So that's why I am saying कि जितना हम लोगों ने इसको serious लिया हुआ, please take it seriously, because as you saw in the group we had nearly 100 people, and they were from IIT, IICs, from other colleges, and they were willing to come, and we took a conscious decision, नहीं कश्मीरी लोगों को प्रॉब्लम है तो we'll solve that problem to our extent. हम ये नहीं बोल रहे कि we'll revolutionize Kashmir education system, this and that, because
again, some people wants to join, and let me do it. From the next meeting onwards, I'll suggest you to use your real names, as the people whom I let into the meeting, they have used their real names. So it actually breaks my flow when I have to admit the people. So मैं इस certification के बारे में बात कर रहा था. तो on successfully completion of all the projects that will be giving you in the course, and then you'll be probably doing one project with the people who are in IITs at least. Like they have not completed yet their bachelor's, but they are in their third year, and they'll guide you, and I'll be your mentor. So that project will be under database, which is in IIC. Database. So we have a club here in IIC by which we give certificates to you, and then I also spoke something about the internships that you'll be giving. Probably these will be remote internships. You don't need to come to IITs or IICs. Probably if some of you want to come, it will be pleasure and it will be a good experience. So हम लोग यहाँ पे तुम लोगों को internship करेंगे at least for a month or so. So यहाँ पे ऐसा काम होगा कि labs will have projects, and I usually take interviews for these labs because most of these professors are I have good connections with, and I take interviews for these labs. तो हम लोग कोशिश करेंगे कि I'll recommend your names, and for the top 3 who are in our batch, for example, we're expecting at least 15 to 20 people, not more than that. So 15 लोगों को मैं expect कर I'll train them, and जो इन लोगों में top 3 के लिए आएंगे, I'll personally give them job recommendations. So I have connections in the industry. I'll recommend your jobs. I'll probably provide referrals for you so that people will take your interviews. For the other rest of the people, I'll make sure कि उनको भी at least calls आए for the interview. But for the top 3, I'm giving you my word that whoever top 3 are from this batch, तो मैं उनको personally recommendation दूंगा in good companies where they'll be getting a good role of data science or data analyst or something like that. So that will depend कि उनको कौन सा field choose करना है. I'll personally provide them the recommendations. That I think Urfi has told me, because many of the people that I heard that you have just graduated and looking for the jobs and things like that. क्योंकि कश्मीर में ये भी प्रॉब्लम है, हम लोग पीछे भाग रहे हैं कि चलो MBBS करना है, ये करना है, and then we have to become doctors, and चाहे वो कुछ और गवर्नमेंट जॉब्स SSB करना है. It's a pure disappointment कि हम लोग टेक में इतने पीछे हैं, because whole world is ruled by tech, और हम लोग अभी भी उसी ज़माने में हैं कि ऐशो जॉब करूँ, ऐशो गवर्नमेंट जॉब करूँ, ऐशो को करने को पच पे उन गए. I want you to share the same enthusiasm that we share. Do not create that mediocre mindset कि नहीं बस इतना अचीव करना है, अचीव बेटर कि बस अब इसके आगे मुझे नहीं बढ़ना है. The mindset should be कि चलो मैंने जितना अचीव किया है, let's do one thing, let me try to be best in that field. अगर तुम लोग most of you are doing a computer science degree, and I know it's not your mistake fully, but it is in a way your mistake as well कि इतना information होके भी you don't learn computer science. But it was also the problem of your teachers and the professors जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं, because they also know teacher कौन ही अपनी choice से बनता है. Most of these people wanted to become something, they unfortunately become teachers. They are teachers by chance, not by choice. So किसी को doctor बनना था, then he failed probably NEET exam, and then he went to some college and did some degree, and he became a professor after all. क्योंकि वहाँ पे survival mode है कि no, I want to survive, I have to earn money. Money doesn't matter. I won't say money doesn't matter. It matters. But the thing that matters most is your skills. कि तुम कितना सीख रहे हो. How much skills do you have? उसके बाद वो जो skills तुम कैसे hone कर रहे हो. How do you use those skills to bring a change? What is money basically? It is just an exchange of value. कि तुम कितना value produce कर रहे हो यहाँ पे. For example, if I am working as a research scientist, they expect me to produce some value. अगर मुझे शायद skills ना होते तो मुझे वो बोलते, look, we are not getting any value from you. हम लोग तुम्हें नहीं ले सकते. So that's how it works. Like if you have skills and if you have good understanding, good grip of things, तो job लेना कोई बड़ी बात नहीं होती. And don't fall into this victimization of going for government job. शायद मैं SSB exam दे दूँ और वहाँ पे वो aptitude solve करो. It's below level. It's below par. और they are basically dumbing down the people. तो वहाँ पे ये चीज़ करवा रहे हैं कि जिस बंदे ने 4 साल या 3 साल अपनी लाइफ के बैचलर्स डिग्री को दे दी और उसने कुछ चीज़ें सीखी, एंड देन दे वांट हिम टू डू अ जॉब जो एक 10th क्लास का बंदा कर सकता है. 10th क्लास का भी नहीं, even he is uneducated and just trained for 2-3 months, I think he'll be able to do it. I think you all will agree with this point कि ये jobs इतना डिमांड नहीं करती है. I want you to be at least at the forefront. So this should be the starting of your journey. Then let's come to the content first. What is the content that I'm going to teach? Do you have any questions regarding anything that I spoke? Probably I spoke a little bit faster, or sometimes I spoke a little bit slower.
I want to take some questions if you do have some questions regarding the career. And I want this session to be interactive. Do not be on mute. I want you guys to talk, feel comfortable, because that's how we're gonna build this. We're gonna build this course, because I want every one of you to know me personally and ask me questions without hesitations. I think some people are comfortable with me, like Omar, Jahangir. These people know me a little bit, so they are comfortable. I want other people also to be comfortable with me. I don't want this. Okay, you call me sir. You can call me bhaiya, whatever you want. So the thing is that I want you guys to know the things exactly. If you are feeling a confusion, just straight away spit out and tell me, no, this is the problem. Can you please solve it? Can you please, like, I'd like to take some questions. It might not be related to machine learning, the things that I spoke so far. Can I just take some questions? Am I even audible? The first thing is that. Yes, sir, you are audible, sir. So I am audible. Nice. Mujib wanted Yes, to say sir. something. Mujib, I think you unmuted yourself and. Omar, am I audible to you or am I audible to everybody? I think, sir, you are audible to everyone. I spoke a lot, I think, from since past 30 minutes. I hope that people are following me. I want Javera to So, confirm. Are you following me, the things that I am talking about from? Yes, totally. So, like, do you have any questions? I want you to ask questions regarding anything. It's okay, like you guys No, go I ahead. don't have any questions related to now. Nice, nice. Nice that you can speak like this, and I want you people to speak with me. तुम मुझसे questions करो, and even if some people are not comfortable with English, ask me questions in Kashmiri. That's the whole point कि हम क्यों ये session अलग कश्मीरी के लिए. If you have a personal problem like मुझे ये चीज़ बहुत तंग कर रही है कि इसलिए मैं focus नहीं कर पा रहा. Probably we have most Norfi here. He's, I think, senior most. I told you, like, he's senior to me. Everything that I think I have learned a lot from him. He has guided me throughout my journey. So even there were ups and downs. So he has guided a lot, and he knows a lot of things. So we can take guidance from him. So probably he might not know know some tech, but he's a lot more experienced than most of the people that are here. So let's go into the essentials of AI. So what are the things that we are going to encounter in AI, and हम लोग क्या पढ़ेंगे चीज़ों को. तो पहली चीज़ जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. दैट आई हैव mentioned here. Let me just change the color. So हम लोग पहले इंट्रोडक्शन टू दिस AI. So we'll see कि AI है क्या चीज़, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे है. So what are the good applications. हम लोग इतना बज़ क्यों बन गया ये. So why is everybody talking about AI now. So लोग इतना ज़्यादा काम क्यों कर रहे हैं AI पे. So what is happening in the industry. Then we'll understand the difference between narrow AI और general AI क्या चीज़ होती है. So by AI I mean artificial intelligence. I won't assume any background. So इसलिए मैं हर चीज़ को डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा. Then we'll see कि machine learning क्या होता है, तो deep learning में क्या फ़र्क है, and then why was the name, why has this name deep learning taken into storm by now, क्यों इसमें ऐसी change आई. So we'll go into these key concepts. So what is meant by machine learning, और हम deep learning में क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को बहुत सारा कोड लिखना है. So we'll start with learning the Python. So हम लोग एक language Python को पढ़ेंगे. So in this language, because I assume that you guys don't know much of programming language as well. Probably some people may know language, but I'll start with bare bone basics. मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कोड करते कैसे हैं. So how to code things. So I'll take up the Python, और हम Python के fundamentals पढ़ेंगे, and then we'll move into data structures, जिसमें हमारे पास है arrays है, linked lists है, stacks, queues, graphs, trees, a lot of things are there. So जो हम लोगों को पढ़नी है. Then we'll move into object oriented programming of Python, कि कैसे जो इंडस्ट्री में हम लोग कोड लिखते हैं कि how is that actually. तुम लोग शायद अभी तक you are making some calculator in Python, that probably it's good for basics. लेकिन ऐसा है कि इंडस्ट्री में हम लोग जो कोड लिखते हैं that's very good code, क्योंकि कोड एक बार लिखना होता है और बार बार पढ़ना होता है. So we have to maintain GitHub repositories. और यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ पे हम सीखेंगे कि कोड को मेंटेन कैसे करते हैं, कोड को मेंटेन कैसे करते हैं इन चीज़ों को, और कोड को कैसे रीडेबल बनाए, कि अगर मैं अपना कोड 2 साल बाद पढ़ूँ और मैं कैसे कमेंट्स करूँ प्रॉपरली रीडेबल कैसे. बिकॉज यू विल वर्क इन अ टीम इन इंडस्ट्री. लाइक यूजुअली आई एम वर्किंग विद राइट नाउ एटलीस्ट 3-4 पीपल. जो मैं कोड लिख रहा हूँ उनको वो समझना है. इट्स नॉट लाइक कि मैं कोड लिखूँ, वो जो फेमस एक आई थिंक इट्स अ कोड कि लिखे मैं और पढ़े खुदा, कि मैं कोड लिखता रहा और मुझे नहीं पता किसको पढ़ना है. एंड देयर इज ऑल्सो गुड मीम कि कल मैंने जो कोड लिखा था उस टाइम मुझे और
अल्लाह को पता था कि ये कोड क्या करता है, और जब मैं कल सुबह उठा अब तो सिर्फ अल्लाह को ही पता है कि ये कोड क्या करता है, बिकॉज आई ऑल्सो फॉरगॉट. दैट्स लाइक हाउ पीपल दे राइट बैड कोड, प्रॉब्ली लाइक दैट कोड वर्क्स फॉर सम टाइम, लेकिन उनको खुद नहीं पता कि ये कल मैं इसको अगर चेंज करना है. यू माइट हैव सीन कि वर्जन्स, एप्लीकेशंस के वर्जन्स आते हैं. दैट्स हाउ एक्चुअली दीज कोड्स आर गुड. दे हैव मेंटेन देयर कोड इन गिट, लाइक गिटहब, गिट लैब्स, और उसमें वो अच्छा रीडेबल बनाते हैं, सो दैट इफ अदर टीममेट्स डू ज्वाइन देम कि वो उनकी कोड में कंट्रीब्यूट कर पाए. विल मेक श्योर कि तुम लोग ये गुड कोडिंग जो स्किल्स होते हैं वो तुम सीखो कि कैसे एक अच्छा कोड लिखते हैं. देन जो लाइब्रेरीज, देन देर आर गुड लाइब्रेरीज की जो लोगों ने लिखी होंगे. पीपल इन रिसर्च राइट अ लॉट ऑफ लाइब्रेरीज. यू माइट बी नोइंग अबाउट numpy, pandas and scikit-learn. जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, यू माइट बी नोइंग अबाउट दिस numpy and pandas there, and then scikit-learn. What are these libraries? These basically is a pre-written code, किसी और ने लिखा होता है, and then you reuse the code. For example, we don't reinvent the wheel here. जैसे एक बंदे को गाड़ी बनानी है तो वो ऐसा नहीं करता कि नहीं 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 ये गोल वाला जो व्हील है ये चलेगा नहीं, प्रॉब्लम आई मेक ए स्क्वायर व्हील. नो, वी एज्यूम दैट जो ये व्हील है तो वो ठीक है, हम इससे काम चलाएंगे. दैट्स व्हाट इज हैपनिंग. नम्पाई, पांडास ऐसी चीज़ें हैं जिसमें अच्छे अच्छे लोगों ने अच्छा कोड किया हुआ है, एंड देन विल रीयूज दैट कोड फॉर आवर एप्लीकेशंस. ओके, सो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे. सो विल स्टार्ट विद बेयरबोन बेसिक्स ऑफ पाइथन की प्रोग्रामिंग को कैसे करते हैं, कि अगर मैं कोई इंस्ट्रक्शन दूँ कंप्यूटर को, इसको कैसे वो मैनिपुलेट करके वो क्या चीज़ें हो रही हैं. देन डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में बोला. देन लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स जो यूज़ होते हैं AIML में, जैसे मैंने बोला numpy है, pandas, scikit-learn, tensorflow, seaborn, matplotlib. देयर आर हेल लॉट ऑफ लाइब्रेरीज, और बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने लाइब्रेरीज लिखे. दे आर रेगुलरली वर्किंग इन दिस फील्ड. देन विल रीड अबाउट databases. Then we'll go in database. So I'm choosing the highlighter. So database में हमें पढ़ना है क्योंकि we'll be dealing with data. Okay. सो हम लोग हर कोई चीज़ जो है वो डेटा पे करने वाले हैं. तो हम जहाँ पे जो स्टोर करते हैं वो डेटा को, वो कोई सिस्टम होगा तो उस चीज़ को हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं. शायद तुम लोगों ने बीटेक में पढ़ा होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स. सो उसमें एक फेमस लैंग्वेज है SQL. तो इस SQL से हम लोग क्यूरी करते हैं डेटाबेस को, हम लोग वहाँ से रिट्रीव करते हैं इन्फॉर्मेशन को. फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव अ डेटाबेस ऑफ नंबर्स, तो फ़ोन नंबर्स की डेटाबेस, हम एक नाम लिखेंगे वहाँ से उनका नंबर आएगा. सो वो क्यूरी दैट. तो उसके बाद कैसे वो एक्सट्रैक्ट करना है इन्फॉर्मेशन, कौन सी इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है. फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास डेटा है ऐसा कि मैं चाहता हूँ, मेरे पास एक डेटा पड़ा हुआ कोविड डेटा, लेट्स सपोज कि मेरे पास कोविड डेटा पड़ा है और मैं देखना चाहता हूँ कि 18+ के जो एज थे, एज ग्रुप वाले थे, उनमें से कितने लोगों को कोविड हुआ था. सो इट एक्चुअली इज ए क्यूरी. सो मेरे पास एक पूरा डेटा बेस पड़ा, आई हैव टू फिल्टर दिस आउट. सो इवन राइट नाउ जो हमने अभी किया, सो व्हाट वी हैड अ बंच ऑफ पीपल. तो तुम्हें क्वेश्चन ये नहीं है कि इन लोगों ने कश्मीर को क्या सॉर्ट आउट किया. वी एक्चुअली यूज दिस, हम लोगों ने क्यूरिंग लैंग्वेज यूज़ की कि वी आर सीइंग कि कहाँ कहाँ पे हम लोगों के मुस्लिम्स के नाम दिख रहे हैं, तो हम लोग ने फिल्टर आउट किए. जो मुस्लिम्स के नाम मतलब फेमस मुस्लिम्स के नाम है वो हमने, जैसे यहाँ पे इजीली दिख रहा था सना, शारिका, उमर, जाहिद, दे आर मुस्लिम नेम्स. सो हम लोग ने डेटाबेस को क्यूरी किया कि गिव अस द मुस्लिम नेम्स, एंड दिस वाज SQL वाज यूज्ड. तो हमारे पास एक लिस्ट है, आई थिंक इट वाज नियरली 70-80 पीपल जिनका लिस्ट था. उस लिस्ट में से 20 लोगों को निकालना और बिना ऐसे किए कि मैं एक एक नाम पे जाऊँ. सो आई हैड टू क्यूरी दैट डेटाबेस. सो मैंने उसको डेटा में स्टोर किया, आई मेड डेटा फ्रेम, उसको स्टोर किया, देन आई रिट्रीव दिस डेटा. इट एक्चुअली वाज अ टास्क. तो मैंने इसको यहाँ पे किया ये SQL की वजह से. सो यू नो नाउ, you will start with Python, you know our language, how to code the things, and then we'll move into SQL. अब तुम लोग को पता है कि डेटा को रिट्रीव कैसे करते हैं, डेटा को सेव कैसे करते हैं, डेटा को मैनिपुलेट करके, ये सारी चीज़ें अब हम लोग इस SQL में सीखेंगे. उसके बाद आता है फंडामेंटल्स, बिकॉज एवरीथिंग इन कंप्यूटर साइंस इज मैथमेटिक्स. प्रॉब्ली दिस विल बी समवॉट शॉकिंग टू मेनी अदर पीपल, क्योंकि लोगों को लगता है कि कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, इनको कहाँ मैथ्स का क्या है, बिकॉज दे जस्ट प्रेस सम कीज ऑन द कीबोर्ड, दैट्स इट. But all of the things that you are doing in your computer is basically mathematics. It's all mathematics. So particular जो हमें mathematics चाहिए machine learning, AI को समझने के लिए, that starts with linear algebra by your matrix determinants. Probably जो तुम लोगों ने पढ़ा होगा अपने +1 +2 में. But we'll see a new perspective of linear algebra कि linear algebra है क्या basically, कैसे इसको use किया जाता है इतने अच्छे systems बनाने में. Like you, how many of you are aware about ChatGPT? Just give a raise of hands if there is an option of raise of hands or something. Nice. I think most of you are. So do you know that कि जो ये ChatGPT है ये काम करता है algebra पे. Like most of the fundamentals that are there वो linear algebra पे based है.
सो वो लर्न कि ये मेट्रिक्स कैसे यूज़ करते हैं. डू यू नो एवरीथिंग द ऑपरेशन फॉर जब हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं, इवन इफ़ यू हैव टेकन +2 इन योर मैथ्स, मैथ्स में अगर तुम लोगों ने +2 में लिया है तो वी डू डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन. डू यू नो वी कैन डू इट बाय मैट्रिक्स, एंड और ये मैट्रिक्स से सही में किया जाता है इन दिस, इन कंप्यूटर्स इट इज़ यूजुअली डन बाय मैट्रिसेस. एंड देन हम लोग और बहुत सारे एप्लीकेशंस है अलजेब्रा के. आई से अ फेमस केस स्टडी. सो एक जगह क्या हुआ, आई थिंक इट्स फ्रॉम यूएस. सो कुछ चोर लोग आए, उन लोगों ने एक बड़े से ट्रक को रोक दिया. आई थिंक दे हैव कवर्ड देयर फेस, एवरीथिंग वाज कवर्ड. तो उन्होंने ट्रक ड्राइवर को मारा और उसमें से जो चीज़ें थी वो ले गए. एंड देन सीसीटीवी फुटेज वर एनालाइज. तो जब उस चीज़ को एनालाइज किया गया तो दे हैव देयर फेस मास्क, तो उन पर कुछ नहीं दिखा कि ये बंदे कौन है, कैसे इनको सॉल्व किया. बट व्हाट दे सॉ अ टैटू ऑन द आर्म. सो एक जो चोर था उनमें से उसके आर्म पे टैटू बना हुआ था. व्हाट दिस दे यूज दिस लीनियर एल्जेब्रा. तो उस टैटू को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एज डिटेक्शन कहते हैं उसको, एल्जेब्रा से हम लोग करते हैं. तो उसमें एज डिटेक्ट किया एंड दे रिकस्ट द टैटू. जब टैटू बना और वो ऐसा टैटू वहाँ पे लोकेट डाउन किया कि इस एरिया के आसपास कितने ऐसे है जो टैटू बनाते हैं, तो उनको पिन डाउन करके बोला कि ये टैटू तुम में से किसने बनाया है रिसेंटली. देन दे लॉग इन दैट एंड दे वेंट टू, एंड एक बंदे ने बोला हाँ आई मेड दिस टैटू आई थिंक 3-4 वीक्स अगो. तो उन्होंने बोला कैन यू लुक इन द डायरेक्टरी कि ये किसके नाम पे बना है. एंड देन दे चेक देयर लॉग बुक्स. उन्होंने बोला ये इस बंदे के नाम बना है. दैट्स हाउ दे यूजिंग एल्जेब्रा उनने एक चोर को पकड़ा. ओके, सो वील लर्न अबाउट दिस एल्जेब्रा एज वेल, कैसे हम लोग लीनियर एल्जेब्रा को यूज़ करते हैं. बिकॉज आई विल से लाइक फॉर 30% ऑफ टाइम्स यू विल बी प्लेइंग विद लीनियर एल्जेब्रा, यू विल प्लेइंग विद नंबर्स. तो तुम्हें इस चीज़ का बहुत ही ग्रिप होनी चाहिए. तो जो एल्जेब्रा हमें शायद एडिशन ऑफ मैट्रिसेस और जो सिखाया गया था क्लास में, दैट विल बी यूजफुल है. बट आई विल गिव अ प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट कि मैट्रिक्स को अगर ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, हम क्यों मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे इसको. अगर मैट्रिक्स का एडिशन, इसका मतलब क्या है, मैट्रिक्स में बहुत इंडिपेंडेंस, बेसिस, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे कि ये सब ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, स्पैन क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस चीज़ में पढ़ेंगे कि लीनियर अलजेब्रा में. उसके बाद आता है फंडामेंटल थिंग्स अबाउट AIML. इफ़ यू अगर तुम किसी भी बंदे को बोलो कि AIML में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ही विल से यू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स. तो प्रोबेबिलिटी इज़ द गवर्निंग फोर्स इन द वर्ल्ड, आई विल से, क्योंकि हम लोग खुद प्रोबेबिलिस्टिक है. सो आई जस्ट लाइक टू टेक I think few lines from you. What do you understand by probability? What do you mean by probability? Can just somebody volunteer and tell कि मुझे लगता है probability ये है. If even wrong, I won't mind. कि अगर ये गलत भी है ये आंसर, I won't mind. So what do you understand? What is probability? Sir, chance of something happening. Nice. So can I take some other answers? Like she said, let's write chance of something happening. Basically, it's a chance of something. Can somebody else volunteer? What do they mean by probability? What is probability? How likely an event is to occur. Okay, how likely an event is to occur. Okay, how likely an event is to occur. Let's say something. So can I get some other definitions from boys, because here girls are outshining boys again. Show some masculinity, boys. Come on. Where is Omar? Umar, are you there? I guess he slept. So Zahid, can you just give me a brief? I don't want you to go into the details. Probability can be outcome of any event. Okay. So let me talk about this. What probability means? Like I think you have a slight idea what probability means. Probability basically means lack of knowledge. If I have lack of knowledge, that is probabilistic event. So ऐसा है कि जब तुम लोग इवन हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे थे इन्फॉर्मेशन, वी आर एक्चुअली प्लेइंग probability. Even Mohsin Urfi and me, I was telling him I know that only 15 people, around 15 people attend the meet. So why? Because I had distribution with me. So मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 100 लोग थे और 100 में से मैंने फिल्टर आउट किया नियरली 29. So I was assuming कि there is a probability of at least like I'll say 0.6% probability है लोगों के आने की. तो बाय बेस्ड ऑन दैट कैलकुलेशन, बिकॉज आई वाज नॉट श्योर कि बाकी लोगों की क्या क्या प्रॉब्लम्स हो, किसी के घर में कुछ इवेंट चल रहा होगा, somebody is busy with some other things, so they had other priorities. So at least I took a number कि 0.6 आने के chances है इस बंदे के, because the randomness, because I don't have knowledge, I had lack of knowledge. अगर मुझे शायद पता होता कि सब लोग एटलीस्ट आते तो I'll say probably out of 29 लोग आते, because I know कि ये श्योर इवेंट था, इन सबको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, they'll come. So probability basically means if you lack knowledge of something, तो हम लोग बोलते हैं कि इवेंट इज प्रोबेबिलिस्टिक. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कॉइन टॉस की बात करें,
तो हम लोग बोलते हैं कि हेड से टेल्स आने की प्रोबेबिलिटीज. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स और टेल्स? कैन समबडी अनम्यूट एंड यस. 0.5 हाँ, each. 0.5 ईच. सो व्हाई डू वी कंसिडर दैट? बिकॉज वी आर सेइंग कि ये कॉइन जो है बाई साइड है नहीं. हम जो इसको उछालेंगे या तो ये हेड पे गिरेगी या तो टेल पे गिरेगी, तो दोनों में से एक आएगा. तो हम लोग बोलते हैं 0.5 इज द प्रोबेबिलिटी. बट बेसिकली अगर हम लोग को पता होता कि कॉइन का मास कितना है, एयर प्रेशर कितना है, और जिस फोर्स से मैं वो कॉइन को मार रहा हूँ वो कितना है, तो मैं एग्जैक्टली बाय द इक्वेशंस ऑफ न्यूटोनियन फिजिक्स मैं कैलकुलेट कर सकता था ये कहाँ गिरेगी. अगर मुझे एयर प्रेशर पता होता, मुझे ये पता होता कि मैं कितने फोर्स से इस कॉइन को मार रहा हूँ, और उसके बाद मुझे ये पता होता कि ये कॉइन का वेट कितना है और मैं किस फ्लिप साइड से मैं इसको उछाल रहा हूँ. सो नोइंग ऑल दीज फैक्टर्स, अगर मुझे ये सब फैक्टर्स पता हो जाएगा, आई कैन प्रेडिक्ट बाय यूजिंग द लॉ ऑफ फिजिक्स कि ये हेड पे गिरना है कि टेल पे गिरना है. तो डू यू अंडरस्टैंड द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट? प्रोबेबिलिटी मीन्स लैक ऑफ नॉलेज. दिस इज कॉल्ड क्लासिकल प्रोबेबिलिटी. तो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी में हम लोग मानते हैं कि देयर इज सम लैक ऑफ नॉलेज. आई डोंट नो मेनी आर द थिंग्स दैट डू इफेक्ट द आउटकम. तो हम लोग बोलते हैं लेट्स कंसिडर इट्स प्रोबेबिलिस्टिक, समथिंग विल हैपन आउट ऑफ दीज थिंग्स. सो वी देयर आर सम यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी, जहाँ पे अभी हमने बात करी कॉइन के बारे में, देयर इज 0.5 प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ऑकरिंग इन द इवेंट. हम लोग बोलते हैं कि इक्वल चांस है यार. बट व्हाट इफ कॉइन इज बाइस्ड? व्हाट इफ जो कॉइन है वो एक साइड से बारी है और दूसरे साइड से वो, लेट्स से इट्स द कॉइन इज बाइस्ड कॉइन, तो हम लोग बोलते हैं 0.7 चांसेस है. Actually there is a lot of things that we do in probability. There is something called as frequent test approach, something called as Bayesian probability. Let me ask you a very beautiful question, probably maybe you will answer it. तुम्हें क्या लगता है, अगर हम एक कोविड टाइम्स में थे, ओके, हम लोग जिस पैंडमिक से गुजरे, आई थिंक इट वाज प्राय 2 years बैक we were hit by a global pandemic. So अगर मैं बोलूँ कि आउट ऑफ 1000 people एक बंदे को कोविड होता है, अगर आउट ऑफ 1000 पीपल एक बंदे को कोविड होने के चांसेस होते हैं, और एक टेस्ट हमने बनाया, कोविड टेस्ट जो हमने बनाया कि हम लोग उससे टेस्ट करते थे कि इस बंदे को कोविड है कि नहीं, दैट इज़ 99% एक्यूरेट. यानी कि उसका क्या है कि जब वो टेस्ट हम लोग करें, दैट्स 99% एक्यूरेट. बहुत कम चांसेस है कि ये गलत रिजल्ट देगा टेस्ट के. तो सपोज कि एक पेशेंट आया, देयर वाज अ डॉक्टर, एक पेशेंट आया, तो उसने कोविड टेस्ट ने उसको पॉजिटिव डिटेक्ट किया कि दिस पेशेंट इज हैविंग कोविड. सो मुझे ये बताओ उसके कितने चांसेस होंगे कि वो सही में उसको कोविड टेस्ट है, बिकॉज वी हैव अनसर्टेनिटी इन दिस कोविड टेस्ट. 99% एक्यूरेसी है. कैन आई गेट सम रैंडम गेसेस? डू यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? दो आई जस्ट रिट्रेट द क्वेश्चन कि कोविड क्या है. मेरे पास एक प्रायर इन्फॉर्मेशन है कि आउट ऑफ 1000 पीपल एक बंदे को कोविड होता है नॉर्मली इन ए पॉपुलेशन. अगर मैं 1000 बंदों को चूज करूँ, आउट ऑफ देम जस्ट 1 person विल हैव कोविड. देन आई हैव अ टेस्ट, एक टेस्ट हमारे पास है, एंड वी नो दिस टेस्ट आर नॉट परफेक्ट. तो टेस्ट के 99% प्रोबेबिलिटी है सही होने के. ओके, सो देयर आर 99% चांसेस दैट टेस्ट जो है वो सही रिजल्ट देता है. तो अ पर्सन केम टू अ डॉक्टर, अ पर्सन केम टू मी, आई परफॉर्म द कोविड टेस्ट. सो वहाँ पे वो पॉजिटिव रिजल्ट आया उसका, दैट टेस्ट शोड दैट ये बंदा तो कोविड पॉजिटिव है. सो व्हाट इज द एक्चुअल पॉसिबिलिटी, एक्चुअल चांस कि इस बंदे को कोविड है? सो व्हाट डू यू एज्यूम? मुझे रैंडम नंबर सा दे दो. फॉर एग्जाम्पल, डू यू थिंक दैट इट इज above 90% उसके chances है? Do you think it is 50% or do you think it's 40%? How much do you think? Can I just get some random numbers? Like I just want to test your intuition. तुम्हारा दिमाग क्या बोलता है, उसको कितने chances है कोविड होने के? उमर? I think it will be 90%, sir. Okay, 90%. So what about 90%. 90? Sana? Maybe 100%. Who said this? Umar? Yes, yes. So Sana, what do you say? If Sana is listening, I think less than 10%. So what's the answer of Javera? What do you say? Javera, are you there? Yeah. So what are the chances that a patient will have COVID if the test said that it is positive test? I think 30%. Okay. So I got some random answers. So here the probability is less than 10%, as one of you, Sana, I think said. So here what is where the Bayesian probability comes in. So you have some prior belief, and you then calculate something, and that will learn कि ये probability calculate कैसे करते हैं. Why is there only 90% chance कि इसको सही में COVID है? Because the thing is कि एक ही बंदे को होता है COVID 1000 लोगों में. अगर हम 1000 लोगों पे टेस्ट करें, the test will be wrong for I think more than 10 people. तो मैं ये that's why एक तो होता है frequent test approach. I'll perform a number of experiments और फिर मैं देखूंगा कितनी probability है.
तो दूसरा होता है बेशियन प्रॉबिलिटी. बेशियन प्रॉबिलिटी सेज यू हैव सम प्रायर बिलीफ, तुम्हें कुछ प्रायर नॉलेज है एंड यू अपडेट योर बिलीफ ऑन गेटिंग सम मोर नॉलेज. जैसे मैं तुम्हें कोई चीज़ बताऊं कि तुम्हें उसमें प्रायर नॉलेज है, लेट्स सपोज मैं तुम्हें बोलूँगा एक बंदा जो है उसके कपड़ों पे मिट्टी लगी हुई है एंड देन प्रॉब्ली ही इज़ हैविंग सम स्टूल इन हिज हैंड, और वो बंदा ऐसे बैठी भी लग रहा है. आई से वेदर ही इज़ अ फार्मर और लाइब्रेरियन, पीपल विल गेस प्रॉब्लम हाँ ही इज़ अ फार्मर, क्योंकि उसके कपड़ों में मिट्टी लगी हुई है, ये चीज़ें. बिकॉज वो जो चीज़ें हैं वो मुझे दर्शाती है कि ये बंदा शायद खेत से काम करके आया है. बट बाई यूजिंग वी कैन मॉडल दैट थिंग बाई यूजिंग प्रॉबिलिटी. हम वहाँ पे बेजियन प्रॉबिलिटी यूज़ करते हैं कि अच्छा इसके कितने चांसेस है लाइब्रेरियन होने के, इसके कितने चांसेस है फार्मर होने के. दैट कम्स अंडर बेजियन प्रॉबिलिटी. एंड दिस इज व्हाट these are why these wonderful models like ChatGPT work. They work on probability. और पहले एक वर्ड देखते हैं, फिर वो देखते हैं कि जो फॉलोड वर्ड है उसके कितने चांसेस है इस वर्ड को इसके बाद आने के. सो दे वर्क ऑन probabilities. Like probability is a beautiful topic. So there are some advanced concepts. I won't be able to teach you everything in probability, but I'll make sure कि तुम्हें इतनी probability तो आए कि you understand the phenomenon. What is basically मैं अभी बात कर रहा हूँ तुम लोगों से, तो आई एम हैविंग अ लैंग्वेज बाय विच आई कम्युनिकेट. चाहे इंग्लिश में बात करूँ, हिंदी में बात करूँ, उर्दू में, या आई स्पीक इन कश्मीरी, तो यूज टू लैंग्वेज यूज कर आई एम ट्राइंग टू कन्वे समथिंग टुवर्ड्स यू. Mathematics is also a language, so we have to convey to the computers. Computers understand maths, and maths is the most, like I'll say, fascinating language. Everything that's written in equations, that's the most beautiful thing on the face of earth. Because maths की जो equations they are so succinct, so condensed, and they have such a huge information. Like, can you imagine that E is equal to mc square? This equation was enough to create an atom bomb. How many of you have watched the movie Christopher Nolan's recent movie? I think what was it? Oppenheimer. Has anybody watched Oppenheimer? I think there are some raised hands. So E is equal to mc square was the thing that made it possible कि वो atom bomb बनाए. Look how elegant in maths. कि maths कितना elegant है. Like usually I went to NIT, और NIT में वहाँ पे I asked them mathematical question I think. So they were like, we are from computer science. हम लोग को कहाँ पता है mathematics? Then a guy is from IIC and he has done a PhD here. So उनने उनको बोला कि जब computer science वाले हमारा कोर्स लेते हम डर जाते थे कि कहीं ये लोग मैथ्स में इतने एलिक्वेंट होते हैं कि हम लोग का सारा ग्रेड खराब कर देते थे. दे यूज टू गेट 98 आउट ऑफ 100, और हम लोगों को उसी मैथमेटिकल कोर्स में 50-60 आते थे. एंड हियर इज रिलेटिव ग्रेडिंग. हम लोगों के IITs और IIC में रिलेटिव ग्रेडिंग होती है. सो लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ देयर आर 100 पीपल, जिस बंदे के मैक्सिमम मार्क्स उसको 100 में से 100 देंगे. सो दैट्स व्हाट लाइक दिस मैथमेटिक्स, दिस इज अ लैंग्वेज इन इटसेल्फ. एक लैंग्वेज है और ये यूनिवर्सल लैंग्वेज. वी हैव टू फॉर्मुलेट अ प्रॉब्लम. जब मैं कोई भी चीज़ कर रहा हूँ तो उसको मुझे मैथमेटिकल चीज़ में बताना है. सो एंड देन कम स्टैट्स. Stats is like probability is basically predicting future. हम ये चाहते हैं कि मैंने कुछ चीज़ें मेरे पास है, like I told you कि मेरे पास कोविड का डेटा ये वो है, तो ये होने के चांसेस कितने हैं. By seeing the data, you want to see okay फ्यूचर में क्या होना है. स्टैटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, स्टैट्स में हम लोग डेटा को देखते हैं, देन वी ट्राई टू एनालाइज कि ये आया कहाँ से बेसिकली, व्हाट वाज द थिंग दैट कॉज्ड इट. ओके, वो हम स्टैट्स से देखते हैं. एंड स्टैट्स इज रियली ब्यूटीफुल. हम लोग इसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. वी फाइंड कोरिलेशन इन थिंग्स. अगर तुमने देखा होगा कि बहुत सारी ये चीज़ें आ रही है कि इस चीज़ को खाने से ये चीज़ होता है. सो हाउ एंड देन वी फाइंड कोरिलेशंस, कॉजेशंस, ये सब हम लोग स्टैट्स में पढ़ते हैं. एंड दिस लाइज इन द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. यू यूज अ हैवी मैथ्स. फॉर एग्जाम्पल जब तुम इवन चलते हो, योर ब्रेन कैलकुलेट्स. जब तुम चलते हो तो तुम वहाँ पे देखते हो कि ये मुझे उतराई में चढ़ना है कि मुझे पहाड़ी चढ़नी है. देन योर ब्रेन मेक्स कैलकुलेशंस कि मुझे कितना बड़ा स्टेप लेना चाहिए और मुझे स्टेप कैसे लेना है. सो एवरीथिंग इज हार्डवायर्ड इन द ब्रेन, बट यू डोंट मेक एक्सप्लिसिट कैलकुलेशंस कि तुम लोग शायद हाथ में कैलकुलेट करने बैठ जाते हो. बट द थिंग इज यू कैलकुलेट इट, योर ब्रेन समहाउ कैलकुलेट्स इट देयर कि मुझे अगर तुम्हें कोई गड्ढा दिखा देन यू हैव टू जंप ओवर इट. तो मैं एक अंदाज़ा लग जाता है कि मुझे इतना जंप करना है. तो ये इतना डिफिकल्ट टास्क है कंप्यूटर्स के लिए कि हम लोग को बड़े बड़े एल्गोरिथम लिखने पड़ रहे हैं कि यार कितना कैलकुलेट करो, कितना जंप मारना है इसको. द ह्यूमन ब्रेन डज इट सो एलिगेंटली. So basically these are calculations based on like probability stats. हम लोग ये चीज़ें पढ़ेंगे. probability distributions क्या होते हैं, इसमें हम लोग statistical inferences करते हैं. by seeing data we'll predict कि अगले दिन क्या होगा. You might have seen कि सुन लो तो शासा देवा दो है prediction. पगा हसे पे रूद, पगा पे शीन, तमिश सॉरी फेल गया, तमिश मतलब तमिश statistics which is weak. तो वो रोज़ की प्रेडिक्शन देता है. तो इसका वो क्या करता है, वो प्रीवियस रेनफॉल देखता है कि पश्चिमी वरी को, ये उनके पास बहुत सारा डेटा होता है. वो उस डेटा को देख के ये प्रेडिक्ट करते हैं कि आज एटमॉस्फेयर में उतना मॉइस्चर,
I'll show you the temperature, I'll show you the, for example, let's say there are some things on the atmospherical level, वो चीज़ें देख के वो predict करना चाहते हैं कि atmosphere में क्या गैस, ओके. सो उसके बाद वो बोलते हैं कि वेदर प्रेडिक्शंस, वी कॉल देम प्रेडिक्शंस, कि प्रेडिक्शंस कैन नॉट बी एक्यूरेट. अगर हमने वो वेदर का प्रेडिक्शन सॉल्व कर दिया 100% एक्यूरेसी, देन गेम ओवर. तो सुनो लोड से बगैर एक्शन चेंज जरूरत है. सो बाय यूजिंग स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी वी यूज मशीन्स टू डू दैट. उसके बाद हर एक जो मशीन है दैट बेसिकली वर्क्स ऑन डेटा. तो अभी मैं बहुत सारी डेटा की बात कर रहा हूँ कि डेटा इवन ह्यूमंस लर्न बाय सीइंग डेटा. जब हम लोग बच्चे थे, हम लोग को कैसे डिफरेंशिएट किया कैट और डॉग में. वी सॉ अ लॉट ऑफ कैट्स, वी सॉ अ लॉट ऑफ डॉग्स. तो हमारे ब्रेन ने कोई पैटर्न सा बना लिया, एंड देन इफ वी सॉ अ कैट तो हम लोग बोलते थे ये कैट है, बिकॉज वी सॉ कि कैट के मोस्ट टाइप्स होते हैं प्रॉब्ली. कैट हैज़ डिफरेंट कलर, कैट इज स्मॉल इन शेप. ऐसे बहुत सारे कैट के डिस्टिंक्ट फीचर्स थे. लाइक डॉग वॉज नॉट दैट क्विक, डॉग वॉज बिगर देन कैट. और हमने, हमारे ब्रेन ने ये चीज़ सीखी. वो लर्न बाय एग्जाम्पल्स. हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल देख के हम लोग चीज़ें सीखते हैं. Am I audible? Like, are you sleeping? Yes, sir, you are audible, No, sir. sir, we are present. Yes, sir. Ah, nice that you are listening to me. I thought ki I am spreading some sleeping gas probably. So, Motion Murphy is also awake. Hey, it doesn't make sense for you, sir. Whatever I'm saying. जब तक कुछ भी चलता है भाई. You keep on going. You're doing good. Okay, I'm saying that you are from a non-tech background. Probably, I don't think whether it makes sense to you or not, but still, it's okay if you're understanding it. It will be a good experience, inshallah. सो डेटा एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, वी वर्क ऑन डेटा. हमारे पास डेटा होता है, एंड देन व्हाट वी डिड, हम लोग इस डेटा को उठाते हैं, एंड देन वी फ्रॉम दिस डेटा वी ट्राई टू फाइंड पैटर्न्स इन समथिंग. तुम्हें अगर बचपन में याद हो, तुम सब लोगों ने कहीं ना कहीं आग में हाथ तो डाला होगा समटाइम्स. यू गॉट बर्न्ड, ओके, यू गॉट बर्न्ड, एंड देन यू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस कि नहीं यार, इससे हाथ जलता है, आई वोंट टच इट अगेन. एंड देन समटाइम्स लाइक इन द चाइल्डहुड इट हैपेंस ऑफन. बहुत सारा ज़्यादा चाइल्डहुड में ही होता है कि अगर कोई ऐसी चीज़ हुई जो जिसके बारे में हमें नहीं पता, फॉर यू एट समथिंग, इट वाज सो सॉर, तो मैं लगा कि आज के बाद मैं इसको नहीं खाऊंगा. तो उसके बाद वो सारी चीज़ें देंगे. वो लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, वो लर्न फ्रॉम एग्जाम्पल्स. तो उस चीज़ को हमें देखने के लिए डेटा चाहिए होता है, और डेटा को विजुलाइज करना होता है कि अच्छा इस डेटा में कितने ऐसे पॉइंट्स है, कितने लोग हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक कश्मीरी डेटा, हाउ मनी पीपल आर लिविंग देयर. लेट्स सपोज कि वहाँ पे 20 मिलियन लोग ले रहे हैं. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि वहाँ पे 20 मिलियन लोग रह रहे हैं, जस्ट अ नंबर. तो उनमें से मैं ये देखना चाहता हूँ कि किन की एज है जो 20+ है, कितने लोग ऐसे हैं जिनकी एज 20+ है. आई एम डूइंग सम एनालिसिस, मुझे देखना है, मुझे उसको विजुलाइज करना है. देन आई वांट टू सी कि कितने लोगों के पास, कितने हाउस होल्ड्स के पास वहाँ पे कार्स है, कि कितने ऐसे घर है जिनमें कार्स है. तो आई रिसेंटली रेड स्टैट्स कि लगभग हमारे पास 22% हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जिनमें कार्स है. सो आई थिंक इट्स बेटर देन इंडिया. इंडिया हैज़, आई थिंक दिस विल गेट रिकॉर्ड, वी हैव टू कट इट. सो फिर जस्ट यू हैव टू. Don't worry, don't. Just cut these things when I am speaking against something. when I post this in online. So India में 7.4% households है average पे जिनके पास cars है. So Kashmir is much richer in that domain. हमारे पास 22% है. So ये सारे हमारे पास डेटा है. We have to visualize things. तो विजुअलाइजेशन कहाँ से आएगी? तो ये सब चीज़ें आएगी जब हमारे पास डेटा होगा, एंड वी वो हैव टूल्स टू विच वी हैव टूल्स टू क्रिएट ग्राफ्स. अभी तो वर्ल्ड कप चल रहा है. आई थिंक मैनी ऑफ द बॉयज़ हियर एंड गर्ल्स विल बी वाचिंग द वर्ल्ड कप. वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इस रन में इतना एवरेज अभी रन रेट ये चल रहा है, इनको इतना जीतना है. इन यमन हार में खतरी करूँ. अभी पाकिस्तान का देखो, तिमन चित्र मैच एंड देयर आर सम परमुटेशन कॉम्बिनेशन. तो वी हैव टू एनालाइज दिस डेटा, वी हैव टू विजुअलाइज दिस, सो वी हैव टू लर्न द टूल्स. तो हम लोग को उस डेटा को क्लीन करना पड़ता है. समटाइम्स जब हमारे पास डेटा आता है तो दैट डेटा इज़ नॉट वेल स्ट्रक्चर्ड, तो हमें उसको स्ट्रक्चर बनाना होता है. दैट विल लर्न ओवर हेयर कि डेटा की प्री प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, कि हाउ डू प्रोसेस द डेटा, कि और उसको क्लीन कैसे करें. द डेटा इज समटाइम्स सो बैड, वी हैव टू क्लीन इट. एंड देन विजुअलाइजेशंस, हम लोग कैसे डेटा के ग्राफ्स बनाए हम लोग इस चीज़ के समझने के लिए. सो वी यूज़ एज अ सेट मैटप्लॉटलिब हम लोग यूज़ करते हैं. सीबॉर्न इज़ अ गुड थिंग जो हम लोग यूज़ करते हैं इसमें. देन कम्स मशीन लर्निंग. ठीक है, अभी तक जो मैं बता रहा था दैट वर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मशीन लर्निंग, कि जो हम लोग को पता होना चाहिए मशीन लर्निंग क्या चीज़ है. देन कम्स द मशीन लर्निंग, एंड द इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू लर्न इज कैलकुलस. तुम लोगों को ऑप्टिमाइजेशन आनी चाहिए, कि हम लोग यहाँ पे मिनिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बेसिकली. सो फॉर दैट यू हैव टू लर्न कैलकुलस एंड न्यूमेरिकल ऑप्टिमाइजेशन. एज ऑफ नाउ आई एम जस्ट स्पीकिंग कि कितना मैथ्स रिक्वायर्ड है. इट्स अ मैथ हैवी थिंग. वाई मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज एट लीस्ट यू हैव द ब्रॉड विजन कि अच्छा इसमें ये चीज़ें होती है दैट आई हैव टू लर्न. तो कैलकुलस पढ़ने के बाद तुम्हें ये चीज़ आएगी कि चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ कैसे करते हैं.
चीज़ों को मिनिमाइज कैसे कर, जैसे मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं किसी को पैसे दूँ, मैं किसी फॉर आई इन्वेस्ट समथिंग, मैं किसी के स्टार्टअप में इन्वेस्ट करूँ, या राइट नाउ यू आर इन्वेस्टिंग टाइम, तो तुम ये चाहते हो कि इसका मैक्सिमाइजेशन यूटिलाइजेशन हो, कि इसमें मैक्सिमली मैं सीख जाऊँ और रिस्क मिनिमाइज करूँ। तो ये मैक्सिमाइज कैसे करनी है चीज़ों को, दैट वी विल लर्न बाय यूजिंग मैथमेटिक्स एंड कैलकुलस। तो उसके बाद हम लोग आएंगे सुपरवाइज्ड एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, रिग्रेशन क्या होती है, शायद हम ये आज इसी में टच करें इफ़ यू आर नॉट बोर्ड। तो उसके बाद अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्लस्टरिंग आता है, बहुत सारे डायमेंशनल रिडक्शन लाइक PCA, TSNE, देयर आर हेल लॉट ऑफ टेक्निक्स। सो वी हैव डेटा, फ्रॉम द डेटा वी लर्न समथिंग एंड दिस इज द एल्गोरिथम्स। देन वी विल सी कि एक यूट्यूब का रिकमेंडेशन सिस्टम ये कैसे वर्क करता है, इफ़ यू गो ऑन Amazon ये कैसे रिकमेंडेशन कैसे रिकमेंड करता है। डू यू नो दीज आर सो ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स, ये कैसे काम करते हैं। Like if I'll just tell you a brief story of recommendation systems. एक recommendation system they'll recommend you products. So एक लड़की ऐसी थी, I think it is a case study from US. So वो she was browsing something on Amazon or something. तो recommendation system was recommending it diapers, cradles, milk bottles, the things that are basically used by toddlers, जो छोटे बच्चे इस्तेमाल करते हैं, उनके वो चीज़ें recommend कर। And his father saw it. छोटी सी बच्ची थी 16-17 साल की, तो उसको recommendation से recommend कर रहा था कि buy diapers, buy milk bottles, buy cradles, and buy some, for example, some things that are used by the infants. So उसके फादर ने जब देखा, he filed a case against recommendation system कि ये लोग pollute कर रहे, they are infecting my little daughter, they are showing her the ads like this. Then when the case was done, तो उसके बाद क्या वो कोर्ट में केस पहुंचा, and then the girl was actually examined, and you know girl was pregnant. Recommendation system knew it that she was pregnant, and father didn't know. So look how powerful is your data. So अगर तुम अभी काम कर रहे हो ना कुछ, like you are typing your thing on the data, this data is being analyzed all the time. और इसलिए virtual, that's how we call it as virtual profiling. तो हम लोग virtual profiles बनाते हैं लोगों के, and then we recommend कि इस बंदे को क्या चाहिए, and what sort of person is this. And right now even what we are doing is हम लोग the work that I am right now doing is हम लोग quantum computers को use कर रहे हैं heart detection के लिए, heart disease detect करने के लिए. We take different tests of human beings. तो उन टेस्ट में जो डेटा होता है कि इसका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है, व्हाट इज़ हिज फास्टिंग ब्लड प्रेशर, इसका ब्लड ग्रुप कितना है, एज कितनी है, इज ही अ स्मोकर, हैज़ ही डज ही हैव सम इनहेरिटेंस ऑफ, डज ही हैव सम जेनेटिक्स ऑफ कैंसर एंड स्टफ लाइक। वी टेक लॉट ऑफ डेटा एंड देन विल प्रेडिक्ट कि इस बंदे को 3 साल में कैंसर होगा कि नहीं। So this is coming, like doctors are going to lose their job at least. That's our plan. कि हम लोग तुम्हारे टेस्ट स्कैन करेंगे, मतलब जो भी पेशेंट होगा उस स्कैन में से वो डेटा उठा लेगा, वो डेटा जाएगा किसी मशीन लर्निंग मॉडल का, एंड द मशीन विल ऑटोमेटिकली से कि इस बंदे को अभी तो डिजीज़ है नहीं, पर डाउन द लाइन 3 साल में इसको इतने चांस है डिजीज़ होने के, सो दैट वो प्रेस्क्राइब करेगी मेडिसिन कि इस मेडिसिन को खाने से इसका इतना कम हो जाएगा, एंड देन प्रॉब्ली एक्सरसाइज करने के लिए बोलेंगे। वो बहुत सारी चीज़ें हम लोग अभी देख रहे हैं, ऑल थिंग्स आर फेड इनटू द मशीन बेसिकली। आई जस्ट गिव यू द एग्जांपल ऑफ रिकमेंडिंग सिस्टम्स, एंड यू नो नेटफ्लिक्स अगर कोई देखता है, so they gave an award of $1 million. $1 million is a big huge chunk of money. तो उन्होंने बोला कि अगर हमारा रिकमेंडेशन सिस्टम कोई बेटर कर सकता है, विल पे देम $1 million. सो दे यूज्ड अ मेथड नोन एज मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन। तो वहाँ पे एक टीम थी, आई नो दिस पीपल, सो उनने एक मॉडल बनाया, देन द टीम वाज नेम्ड एनसॉम्बल। सो आई थिंक देन देयर वाज अ होल फस इन द प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की उसमें डेटा लीक हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो बट दे वन $1 million प्राइस by making a recommendation system for Netflix. उन्होंने ये वाली चीज़ यूज़ किया था, matrix factorization. So after going to the classical ML, we'll learn about k nearest neighbors, and there are a lot of algorithms. I don't want to spit out the terms because I don't want you to feel overwhelmed. तो वहाँ पे बहुत सारे algorithms है हमारे पास, support vector machines है, हमारे पास k nearest neighbors है, हमारे पास ऐसे बहुत सारे algorithms है, Gaussian mixture models are there. We have different algorithms जिनसे हम लोग कुछ patterns ढूंढते हैं डेटा में. That's classical ML. Then the modern ML is called as deep learning. हम लोग इसमें like human brain को mimic करना चाह रहे हैं. We have neurons in there. We have multi-perceptrons. First we learn about single perceptron, multi-perceptrons. Then the beautiful thing is convolutional neural networks will be there, which will be used for image, videos. उसके बाद recurrent neural networks है जो sequence data पे काम करते हैं. And you saw this transformers over here. Are you able to see my screen? There is this transformers written here. ChatGPT is based on this transformers. Everything that ChatGPT is doing is based on these transformers. Actually, this is RNN on steroids. So RNN was initially used for sequence data means, for example, अगर मुझे कोई language translate करनी है, if I am speaking something, अभी मैं बोल रहा हूँ, so if I have to translate it, वहाँ पे dependency होती है sequence की, तो जो previous word है शायद उसका effect है next word पे या उसके तीसरे word पे,
सो वो सीक्वेंस को मुझे कैसे ट्रांसलेट करना है, वो यूज़ आर रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स फॉर दैट. सो उसी को अच्छे से बना के ट्रांसफार्मर्स बना दिया हमने. That's why it's called GPT. T there means transformers. You might be seeing GPT-3, GPT 3.5, GPT-4. So it has billions of parameters in there. So हम लोग के ट्रांसफार्मर्स का मॉडल देखेंगे कि ट्रांसफॉर्म्स करता है कैसे, एंड देन वी सी की नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस ये कैसे करते हैं, कि नेचुरल लैंग्वेज जो है ह्यूमन जो इंग्लिश बोलता है या वी स्पीक कश्मीरी एंड थिंग्स लाइक दैट कैसे प्रोसेस करते हैं. एंड फॉर दैट वी हैव टू यूज लाइब्रेरीज लाइक टेंसरफ्लो और पाइटॉर्च, इसमें हम लोग कोड लिखेंगे. सो दिस इज लाइक ब्रॉड प्लान्स व्हाट आर वी गोइंग टू डू. एंड आई एक्सपेक्ट कि इस काम में हम लोग को करने के लिए आई थिंक इट विल बी नियरली 3 to 4 months दैट आई एम एज्यूमिंग. इफ यू गाइज लाइक सॉर्ट ऑफ तुम ऐसा करो कि तुम इसमें अपना एटलीस्ट व्हाट आई सेड इज 15 to 20 hours आई गेस, तो इतना टाइम तुम दे पाओ तो सो वी विल बी कवरिंग दिस मच ऑफ टाइम. सो आई थिंक फ्रॉम द मेंटरशिप पार्ट आई क्लियर दिस कि कैसे हम लोग कवर करेंगे. विल बी गोइंग ब्रेड्थ फर्स्ट, विल बी वर्किंग ऑन दिस the things that we'll be working on, how to build projects, how to theory, and then तुम्हारे जो assignments projects आएंगे, and we'll be checking, giving them teaching assistants, and you will have one-to-one discussion on your project कि यहाँ पे ये गलती थी, you have to figure it out. Then the best part is I'll say most of you would I think speak for 5 minutes कि हम लोग career और counseling guidance कैसे करें. तब तक मैं पानी पीऊँगा probably. Mohsin, are you ready? Yes, yes. Yes, I'll mute myself. Can you just tell them कि कैसे हम लोग करेंगे? Hello everyone. मूसा ने जितना बताया उतना है ही नहीं. I'm just one among you. चलो, let me start. Firstly, I'm thrilled to be here as a part of your career and counseling team. हमारा जो प्राइमरी गोल रहेगा आपको सक्सेस दिलाने का है, to land you in the dreaming job. इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि आपको इक्विप करे, स्किल्स आपको नॉलेज दे, आपको कॉन्फिडेंस दे, और आपको एक्सेल करे कि आप इंटरव्यू कैसे फेस करें थ्रू, और अपने जो मतलब कंपनी ऑनलाइन प्रेजेंस थ्रू प्लेटफॉर्म्स लाइक लिंक्डइन में कैसे, गिटहब है एंड मनी मोर, ये जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स है जहाँ से आपको जॉब्स मिलेगी. इंशाल्लाह हम आपको वेल ट्रेन करेंगे, वेल स्किल्ड बनाएंगे. बात कर रहे हैं हम, अगर हम बात करें इंटरव्यूज की, जैसे कि इंटरव्यू कैसे फेस करना है, क्या क्या पोर्शंस रहेगी, इंटरव्यू कैसे कवर करना है, उसमें हम सबसे पहले आपको इंशाल्लाह सिखाएंगे कि अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स, कि सक्सीड कैसे होना है. एसेंशियल जो फाउंडेशंस है उनको कैसे ले करना है. कंपनी मतलब जिस कंपनी में आप इंटरव्यू दे रहे हो उसमें रोल्स क्या होगा आपका, वो कैसे बिल्ड करना है. इंडस्ट्री को कैसे जानना है. इंशाल्लाह रिसर्च हम खुद का आपको बताएंगे कैसे करना है. उस कंपनी के कल्चर्स, वैल्यूज या रिसेंट डेवलपमेंट्स जो भी होंगी वो कैसे कवर करनी है और कैसे प्रेजेंट करना है अपने आप को. इसके बाद इंशाल्लाह या जो टेक्निकल मतलब टेक्निकल रूल्स होंगे वो कैसे कवर करने हैं, एसएस कैसे करना है, प्रैक्टिकल कोडिंग है जैसे मूसा ने आपको बताया कि वो खुद कराएगा, वो उस पे कैसे फोकस करना है. इंशाल्लाह सब कुछ हम करेंगे, आपको हेल्प करेंगे इंशाल्लाह. इसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मतलब ऑनलाइन प्रोफाइल बिल्डिंग, जैसे लिंक्डइन है, उस पे आपको अपना प्रोफाइल कैसे बनाना है. एक्चुअली उसका जो आपका प्रोफाइल होता है वो तो रिज्यूम भी होता है. कौन कौन से नेटवर्क टूल्स है वो कैसे रखने हैं. सबसे पहले मेक श्योर कि वो कंप्लीट होने चाहिए, प्रोफेशनल भी और स्किल्स भी, एक्सपीरियंस, गोल्स जो भी हो वो कंप्लीट होने चाहिए, ताकि आप लिंक हो सको जो आपके जैसे प्रोफेशनल्स हो या रिलेवेंट ग्रुप्स हो, फिर आप इंटरलिंक हो एक दूसरे से. गिटहब एक दूसरा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे भी आप अपने अपने क्लियर डॉक्यूमेंटेशन जैसे एंड रीडमी टाइप आपको रखना होता है सब कुछ. इंशाल्लाह वी विल हेल्प यू गाइस इन ऑल दिस. एक और बात जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मॉक इंटरव्यूज़ है. हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आप सबका एक मॉक इंटरव्यू ले, आपको हेल्प करे, आपके अंदर जो खामियां है वो दूर करे, आपको इंशाल्लाह कॉन्फिडेंस दे और आपकी जो नर्वसनेस है वो रिड्यूस करे. उसके बाद एक टीम होगी जो आपको फीडबैक ही देगी. आपने जो मूसा ने जैसे बताया जो कि आप असाइनमेंट्स करोगे उसका फीडबैक भी, आप जो मॉक इंटरव्यूज दोगे उसका फीडबैक भी, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी कि हम फीडबैक्स लेंगे अपनी टीम से कि किस बंदे में कितनी कैपेबिलिटीज़ है, कितनी खामियां है, वो हम चाहेंगे कि इंशाल्लाह आप दूर करें.
एक और बात मैं कहना चाहूँगा, लास्टली हमारा मकसद है कि आपको प्रिपेयर करें, स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रोफाइल बनाए, आपको कॉन्फिडेंस दे, मॉक इंटरव्यूज करे आपके, और आपको वेल प्रिपेयर करे कि आप एक अच्छा जॉब लो, जो आप इंशाल्लाह आपकी लाइफ अच्छी बन जाए, आपके घर वालों की पोजीशन बेहतर हो जाए. होप यू गाइस गॉट मी. थैंक यू मूसा. ओवर टू यू. Thank you so much. So let me talk about like a little bit how to utilize this opportunity. कैसे तुम लोग इस opportunity को utilize कर पाओगे अच्छे से. The first is make your own notes. Am I audible? Yes, sir. Yes. The first thing is make your own notes. So I'm making the notes in here. मैं यहाँ पे लिखते रहूँगा. For example, from next lecture onwards, हम लोग will delve into this, the field of machine learning and deep learning. I'll write notes, and these notes and recordings will be shared with you. Even if I write the code, I'll also share that code with you. But the thing is, you have to write your own notes. You have to write your own code. That's what will help you basically. It's like swimming. अगर मैं तुम लोगों को बताऊं कि कि swim करना है, this is how you have to swim, कि तुम्हें ये चीज़ करनी है, वो ये करनी है, तुम्हें पानी में जाना है, फिर तुम्हें ऐसे हाथ चलाना है, फिर तुम्हें ऐसे पैर चलाना है. This is theory. But till you don't go into the water, you don't know कि मुझे कैसे करना है. Probably some people have brilliant knowledge about dynamics of swimming. वो बताएंगे कि इतना पानी डिस्प्लेस करने से इतना buoyancy force आएगा, and they will calculate everything. But the whole thing is when they go swimming, they won't be able to swim there. That's about note taking and writing your own code and then asking good questions as well. So वो जो notes तुम्हें बनाने, that should be beautiful. और वो ऐसे होने चाहिए कि when you revise that, जब तुम वो notes को पढ़ने जाओ, you should feel कि नहीं मुझे revision करना है इस चीज़ का, because all the things are about revision. So हम लोग यहाँ पे आएंगे space repetition और active recall पे. So these are scientifically methods कि हम लोग active recall क्या होता है, space repetition कैसे असल में notes बनाते हैं, because we are not trained to do this. हम लोग को किसी ने बताया नहीं होता है कभी अपनी जर्नी में कि नोट्स को ऐसे बनाना होता है. दे आर सेइंग कि जो टीचर बोले उसको लिखना होता है. तो फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट एक्टिव रिकॉल. व्हाट एक्टिव रिकॉल मींस? एक्टिव रिकॉल का ये मतलब होता है कि व्हेन एवर यू आर रीडिंग समथिंग, आस्क क्वेश्चंस टू योरसेल्फ. अब मैंने बहुत सारी चीज़ें बोली, आस्क क्वेश्चंस कि अच्छा इसमें ये कैसे हो रहा है, इसमें ये क्यों हो रहा है. राइट दीज क्वेश्चंस डाउन एंड ट्राई टू आंसर देम योरसेल्फ, डिस्कस विद यू. देयर इज अ फेमस गाय फिनमैन, इफ यू नो रिचर्ड फिनमैन. बहुत सा अच्छी बुक लिखी है, एंड देयर इज वो ही वाज अ ग्रेट टीचर एक्चुअली, फिनमैन. So there is something called as Feynman's technique. So if he has to learn a concept, वो ऐसे करता था कि he will learn it and he'll try to explain it to somebody. को question करेगा खुद को कि अच्छा ये ऐसा होना है, फिर वो कोशिश करेगा explain करने की. तो to anyone, not to even some people, he would just have a rubber duck or something and he'll try to explain it to it. And उसके बाद वो then he'll have his doubts. अच्छा ये तो मैं समझा ही नहीं था. I was thinking कि मुझे पर ये समझ नहीं आया मुझे. So you will have to active recall means कि ask questions. And whatever you have read, make questions. For example, right now you learned about the syllabus, so you can write what am I going to learn in, say, probability. So you must know the name of topic. So तुम्हें recall करना है, okay, in probability I'll learn about, for example, Borel sigma algebra. I'll learn about some Bayesian theories and stuff like that. So you'll have to recall it. So that's what is called active recall. People do not learn by just seeing the notes. कि तुम notes देख रहे हो, उनको reread कर रहे हो, बार बार पढ़ रहे हो उनको. That may be a technique, but it's not a good technique scientifically speaking. There is a good book actually. Make it stick. Make it stick is a great book which says कि पढ़ना कैसे चाहिए basically. Make it stick. And there is another good book, how to read. This seems like misnomer, how to read, कि पढ़ने के लिए ये सीखना है कि how to read. There is a good, but this book is by, I think, by Adler. His name is John Adler, I guess. तो उसने एक किताब लिखी है 1940s 50s में कि पढ़ते कैसे चीज़ों को. So it's a really good book. Make it stick is a book कि effectively पढ़ते कैसे हैं, कि अगर हम चीज़ कोई पढ़ें, कोई चीज़ वो अच्छी तरह कैसे पढ़ना है. तो that's what I'm saying. Notes, they will be personal things to you. तुम्हें वो लिखते लिखते याद आया कभी कभी, अच्छा उस टाइम मैंने ये गलत लिखा था, फिर मैंने वो काटा था, फिर मैंने कुछ और चीज़ लिखी थी. तो you have to make your good notes. So active recall says like make the questions and try to answer them. It's a great technique. Just search. I'm giving the terms. You should search these things on YouTube कि अच्छा ये active recall क्या होता है. There are softwares, good software available for active recall. Then there is something called as spaced repetition. Spaced repetition का ये मतलब होता है कि after a certain interval of time you have to repeat. I'll bring up a graph here. Are you able to see the graph? Is it clear? Yes, sir. It's I'll clear. just, I'll just zoom it. So we have something called as forgetting curve. Forgetting curve का ये मतलब होता है कि हम लोग कुछ देर बाद भूल जाते हैं. For example, you learned a thing right here. 0th week में तुमने कोई चीज़ सीख ली. So what happens is you understood, for example, let's say some 65% of this. So red line says कि मैंने इतना सीखा. तो there is an exponential decay. अगर तुम इसको फिर से revise नहीं करोगे, so what will happen is you will forget. If you follow this line,
ये वाला लाइन, तो यू विल सी कि ये फॉरगेट हो रहा है. फर्स्ट वीक में थोड़ा सा फॉरगेट हुआ, सेकंड वीक में थोड़ा सा फॉरगेट हुआ, थर्ड में, और लगभग फोर्थ फिफ्थ के बाद तो ये भूल ही जाते हैं हम लोग. एक महीने 2 महीने के बाद तो वो चीज़ ही भूल जाते हैं. तो अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि आज लंच में तुमने क्या खाया, प्रॉब्ली यू विल रिमेंबर इट. अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि 4 वीक पहले तुमने लंच में क्या खाया, यू वोंट रिमेंबर बिकॉज ऑफ दिस फॉरगेटिंग कर्व. तो वो तुम भूल गए होंगे. सो स्पेस रिपीटेशन मीन्स कि तुम लोग को रिपीट करना है कुछ. फॉर एक हफ्ते के बाद तुम्हें चीज़ों को फिर से सीखना है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू सी द अबोव ग्राफ, अगर तुमने पहला रिपीटेशन किया दिस रिपीटेशन, इफ यू सी दिस ग्राफ, तो अगर तुमने रिपीट किया एंड यू सी दैट फर्स्ट रिपीटेशन में थोड़ा सा और ज़्यादा याद रहा, सेकंड रिपीटेशन में यू सी दैट ज़्यादा और याद रहा, थर्ड रिपीटेशन में और ज़्यादा रहा, बिकॉज इन द न्यूरॉन्स वी हैव समथिंग कॉल्ड एज माइलिन शीट्स. यू माइट बी सीइंग दैट ये बंदा बायोलॉजी मेजर है शायद. सो तो व्हाट हैपन्स इज इन अवर न्यूरॉन्स, अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ स्टोर करनी है तो देयर इज एन आउटर कवरिंग. जितना हम उसको रिपीट करेंगे, बचपन में जैसे सही करा याद उस पर कर रिपीटेशन में रिपीट कंटिन्यू करें, क्या है क्योंकि न्यूरॉन में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है तो उसके ऊपर माइलिन शीट चढ़ जाता है. और जितना वो माइलिन शीट स्ट्रॉन्ग होगा, जितना वो डेंस होगा, तो उतना ये चीज़ भूलेंगी नहीं. तो दैट्स वाई रिपीटेशन मेक्स इट क्लियर. सो रिपीटेशन भी स्पेस्ड होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि तुम अभी रिपीट कर रहे हो और फिर उसके बाद 10 मिनट 5 मिनट बाद रिपीट करोगे. नहीं, इट शुड बी लाइक कि आज किया, 2-3 दिन बाद किया, 7 दिन बाद किया, 8-10 दिन ऐसे से रिपीट करनी है चीज़ें, सो दैट यू विल बीट दिस फॉरगेटिंग करोगे, तुम फॉरगेट नहीं कर पाओ चीज़ों को. So I'll urge you guys to go on YouTube and things like that and know about what this space repetition means. करते कैसे इन चीज़ों को, then कि active recall क्या चीज़ होती है, कैसे इन चीज़ क्वेश्चन बनाएंगे. Then and the beautiful thing I'll say is refer, जो मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, refer to Google and read a lot of blogs, go to Stack Overflow, वो सारी चीज़ें सर्च करो. फॉर एग्जाम्पल देयर इज ब्यूटीफुल थिंग इमेज सर्च. अगर तुम्हें कोई चीज़, फॉर एग्जाम्पल इवन दिस फॉरगेटिंग करो, आई फाउंड इट ऑन इमेज सर्च. सो अगर मैं क्रोम अपना पुल अप करूँ, आई पुल द क्रोम, आई से well this Chrome, it's here. So you won't be able to see it. Let me just show you the screen. Are you able to see my Chrome? So I'm searching forgetting curve. Okay, I'm searching this forgetting curve. So I'll just click on these images. So there will be a lot of images here. So I took this image from here. Let's say this was the image. So there is great like image searches there. So you can see the image over here, forgetting curve. So you have to read blogs. If you have some errors in Python, let's suppose तुमने Google खोला and you search like no module error is something that I get always, no module error. So I'll search it and then you will go to Stack Overflow. That is a famous website and you will go there. I think this screen is visible. I'll just zoom it a bit. Then you are getting these errors and you can read the answers over here कि कैसे इन चीज़ों लोगों ने solve किया इस चीज़ को, and you will get a lot of knowledge from there. तभी मैंने यहाँ पे लिखा है कि that you will have to do a lot of Google search. I'll just switch back to this. So you'll have to refer to Google's, refer to good blogs. There is a good blog like Medium. I'll say I'll just switch again. I'll just search. For example, Medium is there. Medium. Let's say K nearest KNN. So you can find a blog there. So here we have K nearest neighbors Medium blog. So you can read it. ये चीज़ों को. So like you will read it and you will get an understanding out of these. So you will have to be good at searching. Searching is an art. चीज़ों को कैसे search किया जाए. And then probably there are good blogs as well. There is, I think, data science. Towards data science is a good thing. I'll say towards data science. It's also a blog. And then there are, you can see it, can and algorithm, when, why, how. Look, there are good blogs in this. लोगों ने बहुत अच्छा लिखा. Then there are good websites as well. So you can go over there and learn. Let me just switch back the screen. So you can refer to all these things, all these materials, and I'll try my best to give you the good material. And do not follow into any material. Go on the good blogs like Medium is a good. They write good blog posts, and even we at IIC we also write blogs. I also write blogs on database, so you can read these blogs and try to read the material, because reading is an active task in that you have to involve it. Try not to see the videos up front. Because videos, they give you a package information and they don't you don't form good opinions from that. You actually basically take opinions. Like if you watch a picture, अगर तुम एक चीज़ करोगे, तुम एक पेंटिंग को देख रहे हो, you'll extract information from that. और तुम्हें वो लगेगा कि पेंटिंग में पता नहीं वहाँ पे पानी बनाया हुआ है, एक let's say there is a ship और वो ship बह रही है उसमें, and probably there was a storm or something. कोई और बंदा, कोई छोटा बच्चा उस पेंटिंग को देखकर he'll say कि कोई बंदा नाव में सफ़र कर रहा था, उसको मज़ा आ रहा होगा. That's how actually reading book does. तुम अगर बुक को पढ़ रहे हो या ब्लॉग चीज़ों को पढ़ रहे हो, you take information out of it. तुम अपने हिसाब से ओपिनियन बना लेते हो. And then the thing is patience. Sometimes you won't be able to understand certain things. That happens to me. I am not able to understand everything in the first go. You'll have to be patient, search
good things, that this patience is like it's really important. This is what will get you through. अगर तुम्हें कोई चीज़ करनी है, if you don't have patience, you are thinking कि हर चीज़ एक सेकंड में आएगी, I don't think that is going to happen. चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को टाइम लगता है करने में. I used to say this a lot. Good things comes to those who wait. And patience does not mean कि you have just to wait. Patience means you have to strive. You should be having a perseverance कि तुम नहीं, मुझे ये काम करना है. And if you don't understand thing, that means you are learning. अगर तुम्हें कोई चीज़ समझ आ रही है ऑटोमेटिकली, that means you're not putting much efforts. तो सीखने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत मेहनत की जाए इस चीज़ सीखने के लिए. एंड हैव पेशेंस. कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, रेफर टू सर्टन रिसोर्सेज, यहाँ से पढ़ो, मेक ओपिनियंस एंड ट्राई टू क्वेश्चन इट. And have a lot of patience, like put in your hard work in that. And then the beautiful thing is discuss, because you have this group, we had like discuss a lot among yourselves. So what will this do to you is, actually the thing is, when you have discussion with other folks, so तुम्हें ये लगेगा अच्छा मैंने तो इसको ऐसे समझा था, actually it is like this, because I won't be available to you all the time. You cannot throw the questions and I won't be able to answer, and probably I'll be able to answer, but you won't connect that much to me, because probably there is something called as curse of knowledge. Curse of knowledge means if somebody knows a thing, he assumes that everybody knows it. So I'll say कि इनको तो आता ही होगा ये. I'll probably skip that over. But your peers, the people who are in the group with you, so you can make small groups, small cliques where you can discuss the things among yourselves. That is what will actually create your environment. So जब तुम छोटे छोटे groups में discussion करोगे, you will post questions on the group, and probably you will have discussions among yourselves. So that's how you will learn. So first is make notes, and how to effectively revise is just search about the spaced repetition, active recall, what is this, and refer to these Google blogs and other good. There are some good content available on YouTube. I won't say everything is crap there, but most of the things are. But refer to good blogs there, refer to good videos over there. And then the best thing is patience. So the last thing I would like to pull up is a graph over here. This is the graph. This is the results from our older courses. So we had sampled around 100 paid and 100 unpaid learners. 100 paid and 100 unpaid learners. So we charged a little bit of fee for that. For the paid learners, what we saw is that around 90% of the people complete the course. So when they had to pay something, they complete the course. And around 8% among the unpaid learners, they actually complete the course. This demonstrates that if you do not pay something for the courses, it's highly likely that you won't complete the course. So for that we are charging a nominal amount of fees. Like probably if somebody has a reason, like they are not able to pay, they can contact to Motion or fee. But just pay getting 500 per month. I don't think this is much. Why is this necessary? Because of the graph. Because in the past we have done the free sessions, and that we saw that unpaid learners, they don't really complete the course, because they don't invest the resources basically in that. The second thing is they're not serious. They're saying free to tha. Free था तो चलो छोड़ दे, आज नहीं करते हैं, कल करते हैं. But when you put some money or something in that, that's why we are saying 500 monthly is the base price that will be charging you people. I don't think it's much, just to get you the seriousness out of this, and I think the things that we are providing is much more than this. Then I'll say, if you want to get your projects, because we have a team who will be giving you feedback and having discussions with you, additionally we'll have to pay. Initially I was actually telling most of you, let's have the fee of 3,000. Even I discussed that with, I think, Salim Jahangir and stuff, but Mohsin told me no, 3,000 is a bit more, so they won't be able to. So we decided 500 per month plus 300 for your projects, like when because we need to pay your people who are checking your assignments and things like that. If some people have genuine problems, like they are not able to give us this much, it's okay. They can contact Mohsin if we give their genuine reasons कि देखो मेरे पास ऐसे conditions हैं, I cannot pay, let's say 500 or 800 per month. So we'll have a discussion with that. If the guy is really serious and he does not fall into this unpaid wala learners category, ये वाले graph में नहीं पड़ता है वो, then probably we'll think it over. But by seeing the graph, we are pretty much thinking that I think while you pay the things, you become more serious. It's just for your benefit. And second thing is, we also have to make your assignments, to get your assignment checks and things like that. And these people are also like pretty much busy, and we have to pay them a little bit so that they can help you. Otherwise, like how can, for example, I'll be willing to teach you guys free because I'm earning enough money so that I can, even enough money that I can teach you free and I can give you money from here. Motion is also working individual, but the team we have in here, I think there are 4 or 5 people. So these teaching assistants, so they probably will require, because they have to take out their time from busy schedule, and it will be a good incentive for them to just get some money so that they can have an interaction and they have an incentive thing so they can talk to you people. So we are just keeping this 500 per month as a base price and 300 for your assignment. So it is roughly around 800. So initially I was telling 3,000 because I want you guys to be damn serious as I am.
So then most of it told me no, because of the conditions I don't think, even I was thinking to not charge the fee. Then by looking at these studies, and I found that no, if these people do pay and then they become serious. So we are just keeping 500. If somebody does not want to even do the projects and get it checked, so he just has to pay baseline 500 per month, and we'll have these things sorted out for them. And if some people have genuine problems, they can contact Mohsen personally, telling them that look, because of my financial problems, I have this. We're willing to listen to you. And for the certifications as well, why are we taking this? Because we have to get you guys registered officially with the club. So I actually mentioned the certifications program. So we have to do the certifications and get your mentors and assistants ready. So for these certifications, we'll do that. And I will grade every assignment for the people who are paying us. And top 3 among those, I am giving you my word, and I'll give you job recommendations. That's a word from me. Because but if you do the assignments right, everything will be, I think there will be nearly 10 to 15 projects, I'll say assignment projects. I am just using them interchangeably. So there will be roughly 10 to 15 assignments. So if you completely score good in them, and top 3 people from this batch of 15 to 20, I'll personally give them job recommendations. I'll make sure they get interview calls, and I'll see how they progress. And we'll be continuing this. And in this course, that will lay your foundations, and will teach you how to basically learn the other things. Because this AI field is quite vast. I won't say you that I'm going to cover everything that's happening in AI in just 3-4 months, because it takes a whole lifetime. I myself am doing this from past 3-4 years. I even cannot sit. I know everything of this: machine learning, deep learning, reinforcement learning, stochastic process, random process. I won't say that I know all of the things. I probably know some percentage of things, but I don't know everything. So in those 3-4 months, I'll lay a solid foundation, so that you guys land at good jobs. So I'm ready to take any questions that you have. I would love to interact with you, so that you ask any question regarding, like, even if you have some doubts, okay, how are these things going to be conducted. So I'm opening the floor for questions and answers. And thank you so much for being so patient with us and attending the first session. It was nice interacting with you. I'm ready to take questions. So do you have any questions? I'll just take a feedback from starting with the Amir Sharif. So how do you do you find it useful? Do you have some comments? जी सर, काफ़ी अच्छा लगा ये, काफ़ी इंटरेक्टिव सेक्शन था. Do you want something else to add कि ये होना चाहिए था, or we want it like this, or do you have additional comments? नो सर, ठीक था, काफ़ी जितना था तो अच्छा था. Javera, so can you just give us some conclusion remarks? So what are the things that you loved about this? सर काफ़ी अच्छा था ये, मतलब हमें इंट्रोडक्शन मिला कि क्या कैसे आप स्टार्ट करेंगे और आगे हम कैसे इसमें प्रोसीड करेंगे, तो अच्छा था. And thank you so much, Mavish. Do you have some remarks? Yes, sir. Yeah, do you have some remarks, like did you like the session? Was it good enough? Yes, sir. बहुत अच्छा था. And Mujib, so are you there, Mujib? I think Mujib is trying to speak, but he's unable to. He unmuted himself, but we are not hearing your voice. Okay, let's move to Salim Jahangir. How was it? बहुत अच्छा था सर, जितने भी थिंग्स आज हम लोगों ने कवर की बहुत अच्छा था. Thank you so much. Can I move to Sana Farooq? Because I want to know you personally. That's why I'm asking you. I'm just pointing you out towards, so that you've build a relation, so that you can ask me any question. You are not scared कि मैं ये पूछूं शायद लोग हंसेंगे क्लास में. It's okay. So Sana Farooq, can you give some conclusion remarks? I liked the introduction, और particularly I would like to add a thing जो आपने bread first का बोला. I liked that very much. मतलब personally मैं भी चीज़ों को वैसे ही पढ़ना चाहती हूँ. So I liked that part. Nice. Thank you so much, Sharika Mushtaq. If you can add some conclusion remarks.
Yes sir, it was amazing. Like आपने इतने मतलब डिटेल्ड वे में रोड मैप बोला फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, तो मतलब बहुत अच्छा था. Thank you so much. Subina, can we get your comments as well? If you are there. I think she's not there. So, Umar? Yes, sir, I like it everything. But the most thing I like it is that you want to make a path for your community to move up and do some progress in the field of technologies. Thank you so much. Zahid Amin, can you just speak some words that what are the things that you liked in the session and do you want some other things? Yeah, I like the session, but I have some few questions. Yes, yes, sure, sure. What type of internship will it be? It will be a remote A remote or it will internship, be because most of the people won't be able to come to institutes and then find accommodation and stuff like that. So we'll make sure that the internship is remote and you interact with the people who are you doing internship with on daily basis. And I'll be mentoring you people. And if some people are willing to come to the campus and they want to, because then there's a problem of accommodation and you'll have to have a different hassles over here. So I want it to be remote, but if some people prefer, they can take up the offline internships as well. and in, internships are sponsored by IITs or IH? This is not a That, sponsored internship, so actually it will be from we have a bunch of students from IITs. It's actually organized. I won't say sponsored, organized by IIT ISCs, and because I'm the founder here at the club that UG is actually involved in, so you will get a chance to interact with IITs and IIC students over here. Both IIC and IIT. We have a bunch of students from IITs as well, from IIC as well. and what type of certifications will we get? Certifications on completion of the course by this name under the database community and under my mentorship, because previously for we have given the certifications to IITs and you can use those certifications in your profiles of LinkedIn, and then you can also, if you are giving some job interview, you can show them that we have done this course in under ISC mentorship and stuff like that. The certifications will be purely based on your academic performance that you will do in this course. Okay. And one last question. Yes, yes. What type of database will be using, structured or non-structured? It's actually a relational database. So if you know about relational database, so that And is non-structured database. Okay. so that I don't think we'll delve into a lot of into that database stuff, because I think it's whole actually this whole thing is in itself is a topic and actually people do research on that. So we have something called as no query database. You might have even seen no Yeah, SQL, yeah, no query. MySQL, and stuff like that. And then there are MongoDB and Yeah, stuff. in So our if we degree we have only studied MySQL. That's why I'm asking. the thing is, we'll just use SQL because the purpose here is not to delve into database per se, but the purpose is just to get you acquainted with how to retrieve data, how to manipulate data, and how to save, and because you will be deploying these projects somewhere, so you'll have to know this. I won't say ki I'll cover everything database because it itself is a topic. Because in your bachelor's you have that database base management systems. Okay, thank you, sir. Thank you Okay. so much. Thank you so much for your questions. It was, I think, really nice to take these questions so that other people also had these questions. They got some clarity. So, how many of you are willing to take the next session? Because the thing is, I'll have to otherwise invite some more people, because I think I was expecting 20 people, but here we have, I think, near about 12, 13 people or so. So that I just get a rough count कि हमें 7 लोगों को और बुलाना है, so that we can get a good classroom type of environment. By raising your hand or lowering your hands. I think most of you are like in the next meeting, so we'll be having the next meeting on this Saturday. Is that okay? Okay, sir. Is that okay? Because Wednesday, then we have Thursday and Friday. 2 days are in between. Then we'll have Saturdays and Sunday. We'll have sessions, and the sessions will be nearly 1.5 to 2 hours long. And in the next session, just be prepared. I'll just give you some task that you have to do. Okay, just bring up your pen and papers out. I'll just first thing is you have to do some installations. Install Anaconda. It's not a snack. It is a library. Actually a set of libraries. Install this Anaconda. You'll have to install it. And I want you to go on YouTube or something and see how to install this. So how many of you are using your Windows systems, or you have laptops using Windows?
I think most of you will be using Windows. It was a wrong question. I should have asked how many of you are using Linux. It's okay. I'll say like most of you will be using Windows, so you can install this Anaconda first, and then from this you have something called as Jupyter Notebook. Jupyter Notebook, or we say Jupyter Lab. Jupyter Lab. You also install this because when we'll be coding, so you must have your laptops ready where you can code. And I also recommend you to install PyCharm or VS Code. I'll say you install both of these. Install Anaconda first, then Jupyter, then PyCharm. You have to learn to install all of these from YouTube because there are ample amount of online videos by which you can install these. And these are the things that I want you to be ready with. So, and then in the PyCharm they itself give Python and things like that, and we can start. Because I'll be coding from Linux, because I use my Linux machine. I don't use Windows, and hopefully by the end of this course, I'll convince you guys to use Linux. So, because I don't use Windows, it's a crap operating system. It should be rewritten. So Linux is actually a good thing, but I don't expect you to write code in Linux because it's a little bit hard to learn. Because there is something called as scripting and something like that you will pick up eventually. So first thing is install Anaconda, Jupyter Notebook, PyCharm, and another thing is install Git client. That's called Git client. So these are the 4 things I want you to install, because from this we will learn to push our code into GitHub and make changes in there. From PyCharm we'll code in this, and in the Jupyter Notebook as well if we have something. In Anaconda it provides you the environment, and we have different libraries installed like NumPy, Pandas and things like that in this Anaconda. Or even if somebody has a machine which is slow, you can install Miniconda as well. Miniconda, Anaconda. If you feel that Anaconda slows down your machine, you can use Miniconda. So any questions regarding the installation? These are the 4 things I want you to do. Just when we break this class, you should be getting your laptops ready and install these things. Install Anaconda or Miniconda, install Jupyter Notebook or Jupyter Lab, install PyCharm or VS Code or both, and install Git client on your machines. Whatever laptop you're using, just configure these, and you can see YouTube videos. And if you find some problems in there, just watch YouTube, because there is ample amount of content available on how to install all of these things. Okay, sir. these are the 4 things I want you to do before coming to the next class. I hope this was an informative session for you. Because I flow in English, तो मुझे ऐसा लगा मैंने बहुत कम कश्मीरी यूज़ की, मेरे पास ज़्यादा पे कोशिश करना इस्तेमाल, तो इंशाल्लाह next sessions में करो थोड़ा mix के, because I have to put these recordings online, I have to make cuts over there जहाँ पे मैं कश्मीरी बोल रहा था, तो I'll make sure कि तुम लोगों के जब interact, that's why I took live people from Kashmir only, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कश्मीरी में बात करेंगे, you'll have questions as well. और जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा विल कट योर वॉइस, और हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस मार्क करेंगे कि इसने ये क्वेश्चन पूछा था. बी रेडी विद द क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम, एंड नेक्स्ट टाइम विल स्टार्ट विद दिस मशीन लर्निंग पार्ट. If you want, you can just read about this essentials of AI, what do you mean by AI, and you are ready with questions. And I want you to question so much that I'll question my life. यार किन से पाला पड़ गया, इतने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मुझे लगता है मुझे नहीं पता है. तो आई वॉन्ट यू टू बी इन दैट बिहेवियर कि ये सारी चीज़ें तुम्हें पता, एटलीस्ट कुछ नज़र दे के आना, सो दैट यू कैन आस्क गुड क्वेश्चंस अबाउट दीज थिंग्स. विल प्रॉब्ली इन द नेक्स्ट सेशन डिस्कस एसेंशियल्स AI स्टार्ट किसी के बारे में, देन विल मूव इनटू पाइथन. आई थिंक दिस विल रफली टेक अस 1 session, and then we'll in the next session we'll move to Python, and I think this session will be a little longer, Python wala session. Okay, I hope it was good for everyone. Thank you so much for joining, and it was nice to meet you all. So I hope to see you in the next. Thank you so much. Bye. Okay. Good night, sir. Good night. Assalamu alaikum warahmatullahi everybody. Walaikum salam warahmatullah.